सो हेलो गाइज। न्यू ईयर में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मैं प्रॉमिस किया था हर एक वीक मिलेंगे, लेकिन मिल नहीं पाए। तो हम लोग ट्राई करेंगे एटलीस्ट हर मंथ मिले। आज हमारे साथ सबीर सर भी हैं, जिनको आप जानते ही हैं। और मैं अपने नया आईडी बनाया हूँ पाइथन ट्रेडर नाम से। एक पाइथन ट्रेडर नाम से पहले डिस्क्लेमर दो, पहले भी एक काफी सीनियर पर्सन है, वो सैडी भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो वो अनदर पर्सन है और मैं अनदर पर्सन हूँ। मेरा छोटा सा चैनल है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। तो मैं अनदर पाइथन ट्रेडर हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना जो लोग मुझे नहीं जानते हो वगैरह। और सबीर साहब को तो हर एक कोई जानता है। और हमारे साथ और भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और जो ऑटोमेशन करते हैं। तो आज हम लोग वन बाय वन आप लोगों के सवाल लेंगे, और उसके अलावा डॉक्टर साहब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, कुछ क्या नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टार्ट था। तो आप जिन्हें भी रिक्वेस्ट करना रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा। Okay, this space is not all about what he has said, but adding to that you can also ask question related to what Manjesh is sharing in his group, like the trading terminal, Excel, uh, GY, whatever. Any question related to that, like sometimes we can't translate into words. And want to convey the problem we are facing. So, if that sort of problem that you are encountering, you can ask Manjesh directly. If needed, I'll be also answering that question. I think that will be okay, Manjesh. Yes, sure, sir. एंड आई विल आल्सो शेयर कि व्हाट इज माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट और पाइपलाइन में क्या क्या है अपना। क्योंकि आई होप 99% रिक्वायरमेंट विल फिनिश बाय V3 ओनली, and we'll see if any major changes required, then only we'll go for V4. Otherwise, we'll move forward for some next project. Right. Sanju, can you speak a word? I have not listened to you. I think till that we haven't met. I only know that SANJU Sanju is one guy. Okay. If you can introduce yourself to all the peoples, and Angel, I would like to know something about you, like in short intro type. Yes, sir, please. आई थिंक मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपको उसका मोबाइल हैक करना पड़ेगा, तब वो कुछ माइक को अनलॉक करेगा म्यूट किए हुए। Anyways, okay, it's his wish. और नंदू भाई, आपके कुछ सवाल, कुछ फीडबैक, क्या काम कर रहे हैं आप? तो खतरनाक काम कर रहे हैं आजकल। मैं लास्ट में बताऊंगा। अरे स्टार्ट में बता दो भाई तुम। लास्ट में वेट कर रहे हैं ना, तब तक और कोई सवाल आ नहीं रहा है एक्चुअली। ठीक है, एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे। पहले थोड़ा बहुत सर को रनिंग में आने दो। ओके, हाँ ठीक है। नेक्स्ट मार्केट बिल्कुल गर्म हो जाएगा तब आएंगे। ठीक है, ठीक है ना। मैं लोग को ऐड कर रहा हूँ जो लोग रिक्वेस्ट मुझे भेज रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने वाला कोई स्पीकर बोल नहीं रहा। 3 लोग को स्पीकर बना चुके हैं अब तक। राहुल सर हैं, जियो सर हैं। हाँ, नमस्ते सर। ये सर कंटिन्यू। ये सबीर सर से ये पूछना था कि उनके ट्वीट को मैंने पढ़ा था, ऊपर ऑर्डर फ्लो पे कुछ पर सेकंड करके, वो समझ में नहीं आ रहा वो क्या है, वो मतलब लॉजिक क्या है उसके पीछे। कुछ लॉजिक नहीं है भाई। देखो, ये फियास्को स्टार्ट हुआ जब आबिद ने इंटरव्यू दिया प्रतीक के साथ, एंड he has given that a statement that the most liquid asset has a volume per second per minute is like 10,000 lot. तो बहुत सारे लोगों को ये हो गया कि भाई मेरा एल्गो प्लेटफॉर्म है, और he has made a bold remark and is saying कि भाई नहीं चलेगा, खलास ये एल्गो वेल्गो वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये हुआ कि क्या है एक्चुअल वॉल्यूम पर सेकंड, व्हाट इज द लिक्विडिटी, क्या होता है। तो उधर से क्वेश्चन आया, देन somebody tagged me, फिर मैं डेटा से
एनालाइज करके वहां से स्टार्ट किया। ऐसे पहले भी देखता था, क्योंकि आपको you have to analyze LOB, if you want to, if you try to predict some sort of direction in intraday movement. So you have to look after the LOB, where the peoples are positioning themselves, and what are the spreads, what are the expected spread, what are the realized spread, and various sort of things. And it's a deep thing. Anyways, then from that point, I try to every day I try to analyze what is the volume per second that has happened during market hours. Post market hours, I do this analysis on Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, and USD this four index and their derivatives. I try to check, and thereafter I try to get some insights. I post only what was the maximum, minimum, and average volume per second that has happened during the market hours. But there is more to it. That is only the tip of the iceberg. Then if you deep dive into the analysis, you get to know sometimes the peak loss that has happened during the market hour in a second has moved the instrument by 30 points. But during certain hours or during certain time period, even 14 lots make the instrument move with the same you know uh, by the same points. So suppose say 2000 lots in a second has made the instrument move by 14 points, and in some another time period 14 lots only traded in that second, and the instrument has moved by 15 or 16 point, like this sort of analysis. So how you can get to know when to position yourself, and which you can uh, back analyze these things. If you have saved you have a data for the L2 books over time periods, then you can have a probability distribution function or curve, so that which period is having the highest liquidity, and what are the chances that the if say a certain order flow comes during that period, and what are the chances that the uh, what are the standard deviation in which the instrument is likely to move, this sort of analysis. But what I post on Twitter is simple, like what actually is the liquidity per second in most liquid instrument in NSE FL segment, FNO segment. So we can use this technique or intelligence to, I mean, to implement this in 920 variations. Uh, I can't say yes or I can't say no. Both, it depends. You have to see that what I have analyzed. I wanted to check. This tweet has happened, like why the 19th Jan market was that volatile, and was that a cause and effect of this 920 straddle or something of that derivatives, a derivation of that sort. But when I analyzed the 500 top plus minus 5 strikes ATM and bank nifty liquidity over from 9:15 to 10:30, I haven't seen the volume was not peaked. Major volumes what I have analyzed is happening from 12:30 to 2:30, maximum to 2:15. Thereafter the volume diminish, and the volume start major volume chunks start from 12 to 2. People say to the contrary that majority of the volume happens in the first half of the market, but data say otherwise. But you can definitely analyze it further. What are the impacts of going your order uh, at a particular time period, like not exactly in this time period what happens, like if I punch my order in 9:22 59 9:22 something of that sort, 9:15, a derivation, you can have the per second data, and then you can for over 1 month or 2 months, and then you can check what was likely to give you the most accurate fill price.
I mean, are you saying that it will provide an edge to for It can provide you an execution? insight. It can Yeah, provide you an for the insight. execution as well. Yeah. Yeah, for execution mostly, because if you have L2 a snapshot of per second, your minimum you'll get 3 snapshot. Then definitely you will get to know how Yeah. the next millisecond after your trade has happened, then how the market has restructured after your tick has arrived at NSE. When your order arrives in the main order book at NSE, the flash boys or the big boys adjust their positions like plus minus, and their book will change. Either they will fill or they will position above or below you. So the restructuring you will get to know immediately. Sometimes in the illiquid stocks, you can see sometimes you put a liquid limit orders, and the next second after you send the orders, you see you are below and they are above, and below you they reposition themselves, right? Thank you. Okay, Doctor, in between, I also asked some few small questions which some person are asking the group. So today, one person asking which ID we should use. So I know you Which are using ID? BSP. No, I didn't get the question. Manjesh, can you repeat it, please? Which tool you are using for the development? Which Python. tool means which language? Which tool means? Tool by VS Code or Jupyter like that. No. But See, for majority, I have answered this question on Twitter itself. I stay away from this. Helping. So IDs especially. They are yes. bulky, and they make you lazy, and then you are dependent on that ID. VS Code में नहीं है तो काम नहीं हो सकता. I mostly my favorite code editor is Sublime Text, the lightweight Sublime Text I use extensively for all my codes that I write, be it anything, Zig, Bash, ZSS, PowerShell, Python, Rust, Golang, whatever it is, it will cater it. People use Notepad++, but I like the Sublime Text because when I use Linux or Windows, I find no difference, and it is very easy for me to because I get habituated now, okay, using this tool and all the shorthands. Yeah, I'm also got habituated with my Notepad++. I asked this question because I am taking the paid project, so I know few person or more person who is saying, sir, what are the tools I required? So I install the Python along with Jupyter I have to install. Then I tell sir nothing is required, only Python is required. They instead of how the program will run. That's why I asked this question. If you know any ID tool is required. In fact, Notepad you can type your command and run in command prompt. That's sufficient to run any Python project. You can say, boss, there are two categories. One is the developer, one is the end user. End user need the runtime. Developers need that sort of environment where this runtime is not there. You make things to run on the runtime itself, not the runtime development environment. You're not going to develop runtime. So Python है तो Python का program चलेगा भाई. आपके हाँ just कुछ install लोग करना है. हाँ कुछ लोगों को पता नहीं उन्हें लगता है कि शायद कुछ और भी चाहिए मतलब कहीं वीडियो देखा यूट्यूब पे कि सर ये ऐसा इंस्टॉल करना है तो उन्हें लगता है और भी कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा अपन को हो सकता है. संजू कुछ बोल रहे हैं आप? मेरा एक क्वेश्चन है सर. संजू आप अनम्यूट करके ट्राई करो काफी हो रहा था. संजू सर नीचे होगा अनम्यूट का ऑप्शन. हो गया बहुत दुखी कर रहा है मुझे. हेलो हेलो हाँ संजू बोलिए. गुड इवनिंग टू ऑल. सर आवाज आ रहा है मेरा? वेरी गुड इवनिंग. या यू आर वेरी मच ऑडिबल. प्लीज प्रोसीड. हु इज स्पीकिंग हेमंत सर और संजू सर? अभी तो मैं बोल रहा था संजू. ओके ठीक है. मैं म्यूट सभी करता हूँ अनम्यूट करके प्लीज बोलो. 2 लोग 3 लोग का आवाज आ रहा है.
Sanju, we are waiting. You can unmute ठीक है। and और तब तक कोई और सवाल अगर किसके है तो ले लेते हैं, तब तक वो उनका कुछ प्रॉब्लम है माइक का। संजू से बात हुआ मुझे, उन्होंने बोला कुछ माइक का इशू आ रहा है उनके साथ। तब तक और किसी का लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस। okay. Any more questions, sir, or should I ask my question? Go ahead with the convo. If somebody is there, you can just let them in and they can speak. Okay, ठीक है। So nowadays my tools are only coming with 3.11, and some person who doesn't have the OS latest OS or maybe is the Windows 7, he cannot use the 3.11. So currently I am not giving this tool to older versions, but future if more users are there, I am planning to give tool for every version like 3.8, 3.9, 3.10, 11. If more users are there, this is the one update from my side. And ठीक है, now we'll take one question to sir. Sir, do you really require a WebSocket or should API like LTP based API is sufficient for any trading? Or do we It really depends require? upon what is नहीं, the frequency. when we should go for the WebSocket and when WebSocket is not required. When the polling rate is less than or equal to 1 second. Okay, then we have to go for the WebSocket. It depends upon the number of instruments as well. You can't go above 500 and all. Okay. So my suggestion to newcomers, like when I started my learning process, I started with the API only. So initial the WebSocket is not very tough, but it's not a single call, so it's little bit tricky to understand. So for newcomers, you can start with the API call. Once you understand the API calls, we can explore the WebSocket tools. WebSocket is more easier than the API, but it looks some tricky. I think somebody has requested. It is showing me requested bracket 1, but I have I'm clicking, approved. nothing is happening. I am approving it. Total currently 5 users are there. Okay, ठीक है. Then after this project, I am working on this copy trading. Rolling straddle is already completed. I trade this rolling straddle for last month. I traded this rolling straddle, and I'm thinking I should available to our Telegram users or YouTube users notes. So I'm just thinking, should I do or not? I'll discuss this with you. But rolling straddle is ready with me, so very soon we'll release to our users. And another thing I'm Deploy thinking. it, at least give a demo, what sort of thing that you have done and how it's working. And let them at least see how it's working. I won't request any newcomers to try rolling straddle, but if someone is doing rolling straddle, then he can use that tool. It's very easy, very comfortable, and 1 month I have tried, tested. So now I think 99% bugs are bug free. The tool is bug free. And next project I am working on the copy trading software. That will be our pet tool. But very Many have requested. Oh, I have approved, but no one is speaking. 4 requested, I believe. Okay, yes. For Geo 19, every time I'm looking is Nandu, try to speak. Any issue is there for the speaker side? Is it the same Nandu from this NIT? Yes. और नंदू बोला सर कोई बोलेगा क्या? मैंने काफी लोग के ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या स्पीकर लोगों को? तो 7-8% are as speaker. I don't know if somebody will comment or somebody will say anything, then only we'll get to know, right? Okay, chat box में देखते हैं chat message.
सब म्यूट है. I think I think somebody has messaged me that everybody is on mute. Yeah, I have unmuted everyone, so they have to unmute. Hi, who is there? Can you just let me know your name? अब सब अनम्यूट हो गए. Okay, sorry. Okay. हेलो सर, मुझे एक पूछना था अभी. हेलो. हाँ सर, आ रही आवाज आ रही है, बोलिए सर. हाँ सर, मुझे क्या अवेलेबल पाइथन से अपना जो डाटा फेच हो रहा है, तो उसमें 1 मिनट का जो डाटा है वो कौन हाई लो क्लोज वो भी मिल सकता है, तो हिस्टोरिकल डाटा भी आना चाहिए, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट का यूज करके जो डाटा आता है वो कभी कभार बंद हो जाता है, तो उसके हिसाब से जो इंडिकेटर है काम करने कर पाता है प्रॉपरली. तो जो डाटा एक शीट पे आएगा तो इसके ऊपर मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, हाफ ट्रेंड या एक्सट्रीम ट्रेंड लाइन, ये सब काम कर पाएंगे. ऑटो कॉल और एग्जिट भी हो पाएगा. एक्चुअली मैंने सोचा है 2 चीजों को ऐड करने, 2-3 चीजों को, लेकिन ऐड करके देखें कैसा टूल का परफॉर्मेंस. लाइक वन इज द हिस्टोरिकल डाटा का एक सीट ऐड करेंगे, उसमें यू कैन सेलेक्ट द टाइम फ्रेम, आपको जो टाइम फ्रेम उसमें डाटा आएगा, और सेकंड वन इज द इंडिकेटर. सो सम फेमस indicators are there like RSCD, MACD, so those values. So based on that, we also no need to record any VBS type of things. We will capture from the Python, we will use the historical API, we will calculate all the technical value and we will dump in one sheet. But we'll see how, because our main tool is trading tool. If it is lagging, then no need to go for this others data. So I will test and we'll see if it's not if creating an issue, then we'll do this one, not an issue, sir. Historical data and indicator. क्योंकि उस पे क्या होता है, बहुत सारे जैसे इंडिकेटर है कि उसमें से कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी है कि ऑटो कॉल जनरेट होकर अपना बाय भी या पुट कॉल जनरेट होकर प्रॉफिट कमा लेंगे और ऑटो एग्जिट भी हो जाएगा. ऐसे बना सकते हैं हम उसके, लेकिन वो डाटा स्टेबल नहीं रहता है ये माइक्रोसॉफ्ट यूज करके. देखेंगे सर उसे ऐड करके कैसा टूल होता है, क्योंकि टूल में राइट करने पे अगर 2 बंदे ऐड करते हैं ना तो लैग आएगा आपका. जैसे कि आपको विद इन मिलीसेकंड, फ्रैक्शन मिलीसेकंड एलटीके अपडेट हो रहा है, आप बहुत सारे चीजें, बहुत सारे सीट्स ऐड कर देंगे तो आपको डाटा अपडेट होने में टाइम लगेगा आपको. राइट. और दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि सर जो अभी टर्मिनल है अपना ट्रेड टर्मिनल, तो ट्रेड टर्मिनल में क्या होता है कि कभी कभार मैं लगा किसी के ऊपर रन करके देता हूँ और बाहर जाकर देखता हूँ कि मार्केट मुझे पोजीशन आ रही है, तो मैं मोबाइल पे ऐड करवा देता हूँ, तो वो ओपन पोजीशन की शीट पे आ जाती है, लेकिन ट्रेड टर्मिनल के ऊपर नहीं लग जाती, क्योंकि वो ट्रेड टर्मिनल के ऊपर लग गई तो उसमें स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये भी पीछे उस पे ऐड हो जाएगी. ओके, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करेंगे कि अब जो आपने मोबाइल से या वेबसाइट से जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं तो ट्रेड टर्मिनल में भी आ जाए और जो भी एग्जीक्यूटेड प्राइस है वो सब ऑटो फिल हो जाए वहां पे. हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कुछ पॉइंट और कुछ पॉइंट की लिमिट दे देते हैं, स्टॉप लॉस या कुछ टारगेट का हिट करवा देते हैं, लेकिन बाहर जाकर हम मोबाइल पे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि मार्केट देखते हैं कि पोजीशन बन गई तो मोबाइल पे डाल दिया तो ट्रेड टर्मिनेट पे आ गया तो अपना टारगेट भी मिल जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी पीछे लग जाएगा. ओके, ठीक है, ये कर सकते हैं, इसमें कोई लैग नहीं आएगा, ये इसको कर सकते हैं. यस सर. Hello. Yes, sir. Sir, actually, I have one doubt, right? We've been talking with this API, right? This rate limit and everything, sir. Yes. So there are kind of few questions, okay? So on what basis this rate limit will be implemented, like API key or IP address? Just want to know. See, the API rate limit is being defined by the broker itself, and most of the broker is behind this Cloudflare. It depends what are the rules that they are following. Previously, what happened with Zero, that they told us that the rate limit is there, and IP limit will also be there, apart from your API key or user ID. In the case of web users or mobile app user, your user ID is the API key, and for the official API customers, the API key, unique API key, the API limit will be applied. But later on, from December they did they implemented IP wise, like per user unique IP.
So what happened? All of a sudden, there were too many, 429 errors. HTTP 429. That means you have exceeded the API rate limit. So it depends. It varies between brokers to brokers, but majority, they won't go below 10. 10 requests per second. Because it's a good thing. It's a bad thing. It depends upon what you are trying to do. It's a good thing. Like all this DDoS will not work, and your broker is safe during market hours. If somebody has done a mishap in his code, like let's suppose I am the one who is selling some code, and I have made a blunder in my code that will start infinite loops and sending requests to the brokers, and I have sold it to multiple people. Let's suppose 30,000 people I have sold, and my cheap में sell कर दिया भाई, सबको ही ले लिया, 10 रुपए में बेच दिया. Now this 30,000 people will start sending requests per second, 1,000 requests, something like I have used some sophisticated code and everything is going in sync. The broker will has to shut. Their application will crash. It will affect all of the users, right? So it's a good thing, bad thing. It depends upon who you are and what you are trying to do. But sir, actually market is mostly operated, right? So like it was mostly operated by the fake orders and everything, right? So in one way or the other way, somehow people are able to put bulk order, right? So maybe they have access beyond the rate limit, or how they will take care of it. Like but you buy an API, you have for that API having one unique key, and you are using that API access from a cloud server. You are having one API key, one unique IP address from that cloud server. Then you are logging from your desktop the web version with your user ID and password normal way. Now you have two unique IP, two unique keys, right? API keys. Now you have logged in with your mobile. Like you have two mobile, one is iPhone, one is Android. Both is having two different keys, like Kite iOS, Kite Android. There are now four keys, four different IPs. If I will be at your position, what I will do, I'll programmatically do this four thing, and I will send 40 orders per second. If 10 order per second is the limit, simultaneously. Understood? If I okay. Yeah, understood. Yeah. So the second question is like, sir, actually, when we directly querying the REST server, right? So the response will be faster, or through API, if we query, the response will be faster. In your the API based will be always faster, because what they do, they don't do the headers validations, cookies validation, and all. They'll just take your access token. This, if you go through the API SDKs, you'll find headers is having only one or two items. One will be like their unique user agent, and the second will be authorization, bearer, and your token. But if you inspect element in your browser, you will see multitudes of headers like X header, what are the cache timings, where it has to be validated, invalidated, what was the timestamp, from where it is been forwarded, what are the compression that is being used, numerous headers, and all headers has to be validated at the server. Like if I send a request with 20 headers to be validated, 20 if and else case, and you sent an order with two header, only two if and else case, you tell me which way it will be faster. Yours one. No, not yours one, because you are sending only two cases now. The CPU has to say waste only 2 cycles. For me, reaching to my order that is on the 20th line, it has to cycle through all these previous 18 lines, right? If else, if else, if else, and the last is my order. First is the header validation, whether the person is authentic, whether the request has come from the original source kite.zerodha.com or not, whether it is being, which browser they have used, then whether the e tags like caching tags for the time, what was the timestamp, whether a new response is there, what is the compression that is being requested. 14 केसेस और इधर 2 ही केस है भाई, उधर तो इजी होगा ना, 2 कस्टमर को जल्दी डील कर लोगे, 14 को थोड़ा लेट में.
But you are speaking on the client side, right? The validation and everything will be slow from our side. But I'm No, just from the server side. You are okay. sending a request. मैं बोल रहा हूँ, आप जब API के थ्रू रिक्वेस्ट करते हो API के इन पॉइंट पे, API के इन पॉइंट पे जो सर्वर है वो आपके रिक्वेस्ट के साथ जो हेडर आता है वो 2 ही हेडर यहाँ से पास हो रहा है, बिकॉज दे हैव मेड इट दैट वे. उनको Okay. उधर कोई वैलिडेशन के लिए जरूरत नहीं है. But when it comes from the web endpoints, they have to do certain validations. The majority of the like cross origin validation. एक दूसरे वेबसाइट से कहीं मतलब फिशिंग अटैक तो नहीं है. समझ Okay, रहे हो? yeah. kite.zerodha.com का एक फेक बना दिया, वहां से ऑर्डर तो पुश नहीं हो रहा है. Okay, sir. या Yeah, आपके understood? Yeah, understood, sir. So, and the third question is like, in your experience, sir, what is the most reliable indicator you can go with? Like, भाई मैं इंडिकेटर तो यूज नहीं करता, वो मेरे सिस्टम पे मतलब VWAP एक लगा हुआ है, ये तो लगा ही रहता है. okay, ये okay. बोल सकता हूँ. एंड मोस्टली माय वाइफ डूज द ट्रेडिंग, यू नो, मैं तो ऑब्जर्व करता है बस. शी यूजेस VWAP and most probably she'll use anchored VWAP sometimes if she has to check something. Okay, anchor VWAP. Okay. One more, I think, during my 2020 stint with one man, he you know, I respected him much because he was reaping much of the benefit, and he teach me like one indicator, I think, that is Pitchfork, you know. And I have tried and tested mostly, you know, to identify this false breakout or false breakdown. The Pitchfork does validate that thing. You can get an idea. Try to use Pitchfork. I think if you search Shabir Hassan on Trading Q&A, you'll get to that thread, and that thread is good if you can check Yeah. it. So Pitchfork, right? Pitchfork, PIT? yeah. Okay. PITCHFORK. Okay, sir. Yeah. उस तरह से इंडिकेटर तो आपको प्रॉफिट मिल दे सकते हो, लेकिन कितना पॉइंट लेना है वो अपने हिसाब से डिसाइड होता है. हर कोई इंडिकेटर काम करता है, लेकिन अपने हिसाब से कौन सा सुटेबल रहता है वो देखना पड़ेगा. मैं ट्रेड डिसीजन, मेरे वाइफ और मैं ट्रेड डिसीजन के लिए कभी इंडिकेटर को यूज नहीं करता, बट ये है कि आपको सर्टेन हाइपोथेसिस वैलिडेट करने के लिए कुछ रेफरेंस डेटा पॉइंट तो चाहिए ना. अभी सपोज आई एम मूविंग एट 140 किलोमीटर पर सेकेंड या per hour, how I'll get to know? Somebody has to be a certain different reference point. From that point only, that can be validated. What is my speed or velocity? Otherwise, nothing is there without reference point. ट्रेंड लाइन ब्रेक्स विद अल्गो का इंडिकेटर है. उसमें जो इंडिकेटर रहता है 15 मिनट के चार्ट पे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो आपको 10 से 20 पॉइंट और 10 से 20% एक्चुअली मिल जाता है, प्रॉपरली मिल जाता है. कह सकते हैं, मैं उतना यूज नहीं किया करके आपको मतलब एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कर सकता, बट जिनके लिए वर्क करता है भाई. मैं नहीं, वो मैंने कंफर्म किया हुआ है. उसके ऊपर ही मैंने आपके फाइल के ऊपर मैंने वो बना भी दिया था, लेकिन थोड़ा वो माइक्रोस पे ही प्रॉब्लम आ रहा है तो इंडिकेट नहीं कर रहा है. मैं नो हु इज स्पीकिंग. आपका गुड नेम बताएंगे? अभी समृद्धि के अकाउंट पे हो सर, किशोर ब्रोडे नाम. मैं समझ नहीं पा रहा एक्चुअली. ओके. हेलो. हेलो. यस सर, मेरा नाम अनुपम है सर. गुड इवनिंग सर. अनुपम, या गुड इवनिंग सर. एक सिंपल क्वेश्चन है. देखिए, टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके लिए हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, चलो वो तो क्या ठीक है. मतलब आप कभी ऐसा अक्रॉस में आए जैसे समझो कोई इंडिकेटर बेस्ड स्टडीज समथिंग लाइक सुपर ट्रेंड और RSI, तो वो पाइथन थ्रू मतलब फ्लॉलेसली मतलब रन होती हैं नहीं होती हैं, ये क्वेश्चन था. पाइथन के थ्रू फ्लॉलेसली रन होती हैं कि नहीं, मतलब क्या है उसमें पिछली वैल्यूज वो उसको मतलब एटलीस्ट मतलब देना पड़ेगा. समझो अगर जब मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं तो एटलीस्ट जितनी भी मूविंग एवरेज की पीरियड है एटलीस्ट उतना तो उसको डाटा लाइव मार्केट में उतना हमको बैकफिल करना ही पड़ेगा. तो वो मतलब पाइथन थ्रू इजीली होता है या मतलब मे बी टाइम बेस्ड कोई भी प्रोग्राम के थ्रू होगा ये.
किसी प्रोग्राम के थ्रू होगा, मैं ये सिंपली डिनाई नहीं कर सकते ये पाइथन के थ्रू नहीं होगा. Okay. There are certain variants of पाइथन में भी बहुत सारे variant है. You might not have tried PyPy. You might not have tried the C Python. PyPy is one variant of Python, which Okay. is speedier than the normal vanilla Python. Or Okay. then there are certain distribution, like if you're having Intel CPU, then Intel themselves have a distribution of Python, like Intel accelerated Python, that which I use personally on my system. The distribution that comes with from Intel, because I need to utilize my CPU at max. जितनी इसकी कैपेसिटी एटलीस्ट उतना तो दे मुझे. So then there are C Python. Then you can convert all your Py file to PyX, and then you can have an better is execution over the vanilla version. तो अभी हर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो देखना है कि if I'm moving from this version to that version, what sort of improvement I'm getting, whether it is worthy to move or not. 2 सेकंड का अगर मुझे कुछ परफॉर्मेंस मिल रहा है तो and then I'm moving ahead with very few library support, then it's not worth it now. I have to lose a major of the library support just to move to PyPy. Or then ये analyze करके, and then what you have said about indicators, what I suggest, at least have homework here. What homework means is like till yesterday close, everything should be there and readable to Python. When your program starts at 9:15, it should have every indicator data till last close. Then what your calculation the main calculation will be from 9:15 onwards. Okay. Right, and then you can append to it. You at after market hour, you can put endless hours to that your program. Like if it takes 4 or 5 hours, also it will not bother you. Let the program have all the indicators calculated for you, and then you can have the column after this OHLCV OI, all the indicators, and keep it with in a pickle file. So when your program starts, just read the pickle in the data frame. Data frame to pickle, and then pickle read data frame. Sorry, read data from pickle. Okay. So क्या होगा ना, when you save in pickle, it will be just saving the memory representation, the snapshot of memory. Okay. And it will be like how I should tell this, like okay, pull the gun and fire. बहुत स्नाइपर रहेगा. मैं समझ लो पिकल में सेव करके फिर वहां से एक्सेस करना है, ऐसा कुछ. You have it ready in your pickle, CSV, database, whatever. Have it ready before market opens till previous close, so that you have a sniper calculation at market hours. You don't need to do backfill all the indicator data. Just ये कर देगा, append to the previous data. और एक और क्वेश्चन था सर, ये जो आप टिक डाटा आप सेव करते हो जो चैनल में, तो मतलब टिक डाटा क्या पाइथन थ्रू ही आप मतलब इसको करते हो या मतलब कैसे, क्योंकि वन टिक डाटा इतनी स्पीड से आप मतलब पाइथन यूज नहीं करता, मतलब पर्सनल यूज. ओके. पाइथन में कोड करके शेयर करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड इट्स जस्ट लाइक इंग्लिश. तो उनको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो मालूम चल जाता ना. इफ यू अंडरस्टैंड पाइथन कोड, यू कैन रिप्लिकेट इन एनी लैंग्वेज. दिस इज व्हाट आई बिलीव. Good evening, Shabir. Good evening, sir. Good evening, Manjesh. I have the question like if since all the broker have a common function, is it possible to have first make the API itself a little bit general, because it is going to be one of the 5 types of request, either post, get, or patch, or those type of delete, and those type of 5 requests. And the authentication, again there are 3-4 methods. So is it possible to write a bulletproof class which will be reused across all brokers, so that going ahead, suppose we have a public running product, or something, or even if in my case I am a freelancer,
my bread and butter is from coding, not from trading. So that is my request. My nick is Panet1 in the group. Panet, hi, how are you? I'm fine, thanks, Shabir. No, see, you might be aware that many people are doing this. It's very very common thing, and you have to write. If you are really serious about reusing your code and saving tons of hours, not reinventing the wheel, you should start writing with broker agnostic codes. Like you make everything broker agnostic, then you have make your own one wrapper that can translate your own function. Like you have made place order class method or static method in your class, then it should have a only one you can make an enum. So broker can name, you have to pass the broker name and automatically it will be translated and punched to that broker. So the code should be written in a broker agnostic way, and all the ready-made broker Python SDK can be used with that one wrapper that you have to write meticulously. In that wrapper, you have to write the translation method. Then it's very simple now. Everything whatever you have written, it will be there, and immediately it will be translated to that code. Just because you have passed args as like broker equal to 0, the broker equal to angel, broker equal to this, while passing the parameters, args or keywords. It will be super useful. And then you can also have I think long ago I have shared one more parameter like API ways, API equal to this, then web API, mobile API, like that. Then you can with the same code you can fire over different APIs or different methods. This is the way I think. Okay, Shabir. And not only broker API, is there some work already done? Like for any API, is there a common class which is because if I start writing now, my age and my knowledge is that I forget my own first line, what I did when I go to the second line. So is there something that is already done, not for broker? No, I think they have done, but commercialize it. In 2020, I was following this guy Padimal, and this Padimal have, I think, algo stock developer or something like. They have made a company or some business out of it. Stocks developer maybe, I think. So the guy has started to write the broker agnostic code in Python, and later he made it. First he is doing in Python and something, and later he moved to web platform. So I think I most probably believe the underlying is still the same, but you are having a UI on top of that. So I think he has shared. Still, he has the code in GitHub most probably. If I'll be having a link of that, I think maybe I will be having in a fork somewhere. I'll send it to you if I have. Okay, Shabir. Okay, Shabir. Next question, I will leave it now. Let others complete, and I'll wait for my second chance. Thank you so much. No issue. Thanks. Hey, Manjesh, are you there or you have left? गायब हो गया. Okay. What on request? Surya. Approve none. I'm not able to approve anyone else. Surya is there for and none Kishore. I'm clicking in approve, whether it is approved or not, I don't know. Hi. Hello, sir. Hi. Go ahead. Tell me. सर पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि पास्ट में आपने बहुत हेल्प की हुई है कोडिंग के जरिए. नहीं जी, मैं क्या हेल्प करेगा, आप लोग
आप जनरस वर्ड्स बोलते हैं, थैंक यू। नहीं सर, सोशल मीडिया में इतने हम्बल मैन मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, आप जैसे जेन्युइन मैन। नहीं जी, 11 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस में हम्बल होना ही पड़ता है। आप मुझे 21 ईयर से मिलता तो कुछ और ही बोलता था। उस समय मेरा एटीट्यूड ये था, आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड, बट अभी क्या है, वर्ल्ड ने कॉन्कर कर लिया मेरे को, सिंपल। इट गोज द अदर वेज। तो एक ही चीज है, मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में ये सीखा, द मोर हम्बल यू आर, द मोर यू नो डाउन टू अर्थ, द मोर इजियर द लाइफ विल बी टुवर्ड्स यू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी स्ट्रेटेजी पे कोडिंग करवाना है बराबर डेवलपर से, तो इसके बाद क्या इसमें एरर आने की संभावना है या नहीं एरर आ सकती? देखो, कोडिंग करवाना है ठीक है, बट व्हाट आपका कमिटमेंट क्या था वो डेवलपर के साथ। इफ समटाइम्स आफ्टर आपने कोड ले लिया तो उसके बाद से मेजर वर्जन में कुछ फ्लॉ था और वो वर्जन चेंज हो गया प्रोग्राम का, तो क्या कंपैटिबल होगा आपका वो प्रोग्राम, वो आपको डेवलपर से पहले पूछ के रखना पड़ेगा कि बैक सपोर्ट और फ्रंट सपोर्ट या फ्यूचर सपोर्ट आप देगा कि नहीं देगा। एरर जो भी आएगा, आप कभी भी डेवलपर से बनाने से पहले आप ये लिखो कि लॉगिंग सपोर्ट फर्स्ट होना है। मेरे को प्रोग्राम के हर लाइन का ट्रेस चाहिए पैरेलली में, परफॉर्मेंस नहीं इम्पैक्ट होना, बट मेरे को वो हर लाइन बाय लाइन ट्रेस होना, मेरा प्रोग्राम कब किस टाइम स्टैम्प पे किस लाइन पे था, क्या हुआ मेरे को मालूम होना। इनकेस कभी एरर आएगा भी और वो डेवलपर सपोजिटली हैज मूव अब्रॉड फॉर अ डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट इन हिज लाइफ, या कभी किसी के साथ धोखा हो गया, आई डोंट नो, बट बहुत वाइडेशन बोला मैंने, हो सकता है वो बेटर प्रॉस्पेक्ट के बाहर चला गया या कुछ गायब हो गया। तो आपके पास जब व्हेन यू आप ये अपने कोड के साथ किसी और के पास जाएगा तो एटलीस्ट द अदर डेवलपर शुड नो कि भाई हुआ क्या था, ये लिखा क्या है कहानी। यू शुड हैव द लिटरेचर, द कंप्लीट स्टोरी विथ यू। और लॉगिंग रहने से आपको भी ये फायदा होगा कि पर डे आप एनालाइज कर सकता है कि क्या हुआ क्या। तभी मैंने ऑर्डर किया था, 20 सेकंड तक ऑर्डर नहीं गया, तो आखिर क्या हुआ, कोड कहाँ पे फंसा हुआ था, मालूम रहना है ना। या तो वो लाइव भी दिखना है या तो आपको टेलीग्राम पे आना है, तो ये करने का भाई। व्हेन यू आर स्पेंडिंग, व्हेन आई स्पेंड माय मनी, तो ये सारे यू हैव टू गो विथ योर ओन टर्म्स। व्हेन आई बाय समथिंग, मैं अपने हिसाब से देखता है, मुझे एसी चाहिए तो कितना टन का चाहिए, मेरे को क्या स्टार रेटिंग लेना है, वो डीसी टेक्नोलॉजी है कि नहीं, तो सब मेरा रिक्वायरमेंट रहता है। अदरवाइज तो मुझे सामने वाला तो नहीं बोलता है ना सर ये बेटर रहेगा। यू हैव टू गो विथ योर ओन रिक्वायरमेंट एंड गेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर नीड rather than the otherwise other way around. ओके सर। तो सर इसको लॉक करने के लिए क्या थ्रेड में चलाना पड़ेगा अलग से? Who is speaking? I'm not getting it. संजू। संजू। हाँ संजू, टेल मी। जैसे लाइन हर लाइन पे क्या हो रहा था, सिस्टम कहाँ पर था, तो उसके लिए थ्रेड में लॉगिंग करना पड़ेगा थ्रेड में। हाँ थ्रेड में लॉगिंग कर लो, बिकॉज लॉगिंग आपके लिए वो नहीं रहे ना कि मतलब इट शुड बी नियर रियल टाइम। इफ इट इज मतलब परफेक्टली रियल टाइम, नियर रियल टाइम भी चलेगा, थोड़ा अगर लैग भी 1 सेकंड का लैग भी है तो बस एटलीस्ट 1 सेकंड 1 सेकंड के बाद तो पता चल गया, रादर देन एंड ऑफ द डे या पता ही नहीं चले। नहीं से कुछ भी नहीं से तो अच्छा है ना, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अभी 1 सेकंड में पता चल गया, 2 सेकंड या 5 सेकंड में भी आपको लॉग पता चलेगा। मान लो कि 5 सेकंड बाद you get to know you fired an order and it has been rejected or something worse has happened. 5 सेकंड बाद पता तो चल गया, you can act. At least you had the chance to act instead of not having the chance at all. हाँ। तो उससे जैसे कुछ मिली सेकंड्स का ऑर्डर जाने में कुछ फर्क पड़ेगा ऑर्डर एग्जीक्यूशन में? No, I'm just giving an example of order aggregation. Many things like I have made a call to fetch the historical data to calculate my indicators on which the entry signal has to be generated. Boss, the historical API whenever I'm calling, and it was giving continuous 429 errors. It was saying the server was saying you have exceeded your limit. I'm not going to give you any historical data, but you are not aware of it, boss. Nothing is being printed. People, when I have seen codes that are being sold for plenty of money and this that, no tracing, no nothing. They are selling like I'm giving multi-threaded, multi-processing, blah blah blah. The simple thing, you can't print with multiple threads and you will not get to know in an order function what happened in what thread.
People are avoiding mutex locks. Nothing is going to be print out. Even the simple print will not function. Have you seen your multiple threads, printing out things in order or multi-process things in one common terminal where you can see, क्या हो रहा है आपके सारे thread में? If you have seen, just let me know. People are avoiding that. Mismatch हो जाएगा ना सर? Definitely. It's unordered a minute. Race condition will come. One print will cancel the other print. आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा. Otherwise, the strings will collide and you will get an encrypted gibberish data. You will not be able to make sense out of it also. So better to have a log. A slow log also will work, if not real time. It's better to have something. And that log you can stream over your Telegram, WhatsApp, whatever, web with authentication, of course. But at least you should know what is happening. Passive information is better. चल रहा है, notification आते रह रहा है आपको Telegram पे, आप देख नहीं रहा है, it's your wish. But you have the chance, you have the ability, आप कभी भी देख सकता है क्या हुआ 5 सेकंड पहले. हेलो. Yes. सर जनरली जैसे अगर मैं कोई कोड किसी को बना के देता हूँ तो जैसे मैं उसमें ये की लाइट मतलब हाईलाइट करता हूँ कि कहाँ पे तुम्हारा इम्पोर्टेंट स्टेप है. जैसे लाइक फर्स्ट सबसे पहले एंट्री करनी है, फिर जैसे मेरे को स्टॉप लॉस पुट करना, स्टॉप लॉस ऑर्डर चेक करना वगैरह वगैरह. तो जैसे अगर मैं किसी भी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मूव करता हूँ तो मैं मतलब उसको टेलीग्राम पे या कहीं पे भी बंदा बोलता है तो वहां पे नोटिफिकेशन ये डालता हूँ क्या मतलब मैं करंटली इस स्टेप में हूँ या तुम्हारा मतलब अभी सुपर ट्रेंड का जैसे ऑर्डर लग गया है, सुपर ट्रेंड पे ट्रेलिंग चल रही है, फिर एंट्री हो रही है. तो मतलब इस तरीके से मतलब लोग बना सकते हैं सर. Even if the critical information that you're passing, boss, I have requested historical data, I got it. Now I'm at a step like, okay, I have got the indicator data. This is the signal. मतलब every 5 seconds you are saying I have the indicator data, but your entry signal has not been generated. अब जैसे ही एंट्री सिग्नल आ गया वैसे आपने अगर नोटिफिकेशन टेलीग्राम भेजा, बस आपका सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर का सिग्नल आ गया है, ये इंडिकेशन ऑर्डर वाले थ्रेड में पास कर दी गई है. अब वो ऑर्डर थ्रेड का मसला है. अब ऑर्डर थ्रेड जब रिसीव करेगा देन ही कैन पास इन्फॉर्मेशन टू द सेम टेलीग्राम चैनल, एंट्री सिग्नल रिसीव, फायरिंग ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर रिसीव होते ही सीधा ऑर्डर आईडी उधर दे सकता है, भाई मैं ऑर्डर कर दिया था, रिस्पांस सक्सेसफुल 200 था, ये ऑर्डर आईडी है, आगे देख लो. इफ यू वांट टू चेक योर यू कैन सेंड अ स्नैपशॉट लाइक यू कैन पार्स HTML टेबल एंड सेंड एज एन इमेज टू द टेलीग्राम. तो उधर पता चल जाएगा कि भाई ये ऑर्डर लगा था, इसका ऑर्डर आईडी है, करंट ऑर्डर बुक ये है. बाकी अगर आपको देखना है तो अपने मोबाइल ऐप में देख लो, ब्रोकर के ऐप से या वेब ऐप से, क्या अगर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ही पास कर दिया और ठीक है. इफ नॉट लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, even slow information will be good, better than no information. Right. लेकिन सर जैसे ये लॉगिंग के चक्कर में ऑर्डर पंच होने में कुछ लैग तो नहीं आ जाएगा ना? वही तो बोल रहा हूँ, देखो मल्टीपल थ्रेड्स जा सकते हैं, स्लो में डालने दो. व्हाट यू डू, यू पास व्हेन यू आर डूइंग IO operations are the slowest in any system. इसको हैम्पर नहीं करने के लिए क्या है, यू हैव टू पास, यू मेक the logging code should be in a separate file and you have to use multi-process queue. You queue the data, let the other file do the things, let the other file receive the data over a queue, shared queue. You can import it like a import queue from multiprocessing. So then you can pass all the information to that queue, and the other the file, logging file, the logging.py file is running. It will receive the data and simultaneously write it. Then you can have a third other program running in parallel in Flask or anything, the Telegram forwarder or anything of that sort. That continuously is reading that same file which the other file is writing as a log, and you can send the data or stream the data parallelly. This will be truly parallel. सर ये तो माइक्रो सर्विस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया ना? अभी parallelly achieve करना है with the same Python code, then you have to go with multi-processing. Multi-threading is not parallel. Believe me it or not, you try yourself, you will get to know. Yeah sir, multi-threading मैंने ट्राई किया था. अगर उसमें कोई IO टाइम नहीं होगा तो multi-threading और single thread सेम काम करता है. हाँ, if IO is not involved, majority multi-threading when we use, why we use, because of this IO only, IO heavy things.
majority trading is being used for files access, where you have to interact with the disk. For networking, I won't suggest networking. Better to go with async. Asynchronous coding approach. Asynchronous request will be faster than threading in that networking. सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मेरे 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जैसे अगर मैं किसी को सोर्स कोड देता हूँ, अगर जैसे मैंने किसी को मतलब कुछ भी कोड वोड बना के दिया, तो अगर उसको जैसे मेरे को अगर सोर्स कोड नहीं देना पाइथन में, तो सबसे मतलब बेटर तरीका क्या है? मतलब एक तो उसको मैं .py में कन्वर्ट करके दे दूं। अभी in Python, most of the time it get cracked. After one or two version, somebody will crack it only. Python will give bytecode, and the bytecode mostly will be cracked. If the other guy is doing knowing what he is doing, then he'll definitely crack. And if not the actual source 100%, then at least he will get an idea what is happening. So let's suppose if I want to decompile some code, and the decompiler fails, then I go disassembler, and disassembler will be like 50 times giving 100 times more information than what decompiles give. Decompiles will give complete source code in a structured format, but disassembler will give how the assembly, how the calls are being functioning inside the interpreter. But if the person is knowledgeable enough, he'll get to know, and he'll transfer that disassembled file in the actual source code. You can go with one paid option. I think some PyArmor is there that is using C. Their source is closed source, that is not open source, because most of the obfuscator that is available on GitHub or another, they're having open source, and the other guy can read their source code how they're doing, and they will do the reverse. When it comes to the paid thing and the closed source, nobody is knowing what the other guy is doing. It's a black box. So reversing the same process will be difficult, and many times people get frustrated while decompiling and they leave it. So if you are if you can pay some bulk, you can go with PyArmor or something like that. Otherwise, what you can do, you can take any low level program like C, Go, Rust, anything that create exe or elf. What you do, call the Python code from your GitHub repo, and make the system run the file, the code that is in a string. Like if I do it in Rust, what I will do, I'll make a request to my GitHub repo, let the response come, and I'll pass that code as a string to the Python interpreter. So the code will function as it is, but no Python file will be written on the disk. It will be directly executing out of memory. ओके, ये कर सकते हैं। सेकंड सर मेरे को ये बताओ कि जैसे मैंने अभी जैसे मंजेश सर भी काम कर रहे हैं इस पे, और कॉपी ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर पे, और मैंने मतलब वैसे पहले 1-2 बार बनाया भी है। तो सर मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा एक थ्रेड में मैं ब्रोकर से वेब सॉकेट के थ्रू, या फिर अगर वेब सॉकेट का ऑप्शन नहीं है तो हर 1 सेकंड से एपीआई से मैं ऑर्डर बुक फेच कर रहा हूँ, और उसके बाद में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे पास प्रीवियस ऑर्डर थे उनके अलावा कुछ नए ऑर्डर आए हैं, और अगर वो ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए हैं मार्केट पे, तो मैं उसको एसिंक्रोनसली बाकी जो भी चाइल्ड अकाउंट है उसमें रिप्लिकेट कर रहा हूँ। तो सर इससे कुछ मतलब बेटर तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें कई बार मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। मैं I'll suggest like आप एक कस्टम क्लास लिखो for the order itself, for the client itself. Client is having a class object which is having its own order book class, which automatically continuously fetches its own order book and keep it in the latest state. And when this new order fires, when the new orders completely status come from the master account, and it has to be child replicated to child account, just send this pass this order ID or instrument with quantity or what the direction to that object instances. Let the object instance itself compare this whether they are having
whether they are inheriting that instrument in a counter position or not. If not, then fire the order. If the counter position is there, do not fire the order because it will square of the position itself. ओके सर। सर एक दूसरा मेरे को ये बताना था, जैसे मतलब जनरल क्वेश्चन है, अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मतलब क्यूरियोसिटी है मेरे को जानने की। तो आप लोग बहुत एडवांस से बीटेक कर रहा है, मैं बीटेक में ये सब सोचा भी नहीं था कि ये सब करेगा। एनीवेज टेल मी। या तो सर जैसे अभी मैंने वेब आपका कंप्लीट किया है, तो मैंने सर नोड.जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट में की है, क्योंकि अभी जैसे कंप्लीट जो ट्रेंड है वो जावास्क्रिप्ट का ही चल रहा है वेब के लिए, क्योंकि फ्रंट एंड में जैसे रिएक्ट करते हैं तो उसके लिए भी जेएस की जरूरत पड़ती है, तो फिर मैंने नोड.जेएस भी कर लिया। और पाइथन जैसे मतलब मैं पिछले 2-3 साल से इसमें फ्रीलांसिंग में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को पाइथन का भी मतलब ट्रेडिंग के रिलेटेड मतलब इंटरमीडिएट सा नॉलेज है। तो सर जैसे अगर मैं मतलब कभी कभार सोचता हूँ कि जैसे अल्गो टेस्ट हो गया या तुम्हारा ट्रेट्रॉन हो गया, या फिर जैसे एक क्वांट करके कुछ है जो भी मतलब तुम्हारे अल्गो टेस्ट जैसी सर्विस देता है, जहाँ पे मतलब आप जाके कुछ भी मतलब उनका टेम्पलेट ले सकते हो, फिर उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जैसे आपने फ्रंट एंड से कुछ भी डाटा भेजा तो वो बैकएंड में जाके सेव हो गया उनके डाटाबेस में। तो सर उसके बाद में जैसे मतलब उनका जो सर्वर है वो किस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर किया जाता है, कुछ आइडिया दे सकते हो? क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे अपन फ्रंट एंड से डाटा पुश करते हैं बैकएंड के लिए, तो वो एज ए मतलब जैसे अगर उनका कुछ सर्वर है लिनक्स वगैरह चल रहा है तो उसमें मतलब वो फाइल क्रॉन जॉब में शेड्यूल कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, किया मतलब इस टाइम ये फाइल रन करनी है और इसमें जैसे ये वेरिएबल है जो यूजर ने भेजे। I can talk on this. It can be a whole another space, and I think not everyone is going to be interested in that. Possible है, different architecture, backend and front end should be different. Backend को इस हिसाब से बनाना है that it should not fail at any case. At any case means 99.9% chance should not that it should not fail. Front end क्या है? Front end will be a static code that can be served from any CDN. कहीं भी cache कर दो and you can easily get it. The majority of the calls will be either from the REST APIs, HTTP calls, or either from WebSocket or Web Transport. So there are two different things, and the architecture itself will be the design pattern and the software architecture software design will be entirely different for these two things. You are learning Node.js, I'll suggest go with learn TypeScript as well, and the world is going to move to WebAssembly. Future is WebAssembly. So if you try your hands on right from now, I think by the time the world will be caught up with WASM, you will be pro in that. So make a note of it. WebAssembly. Yes. Learn that, and for backend, people are having a backend in Python, backend in any other low language, depending upon the use case, like how much volume of requests you are going to process and what will be the target audience that you are going to cater with. इस पे डिस्कस कर सकते हैं आप मेरे को, मैं डायरेक्ट आपको बात कर सकता है. You can I'll DM me, I'll give you my number, we can have a chat and I'll tell you everything. I think it's a very broader scope, so I'm skipping it now. It doesn't mean that बात नहीं करना चाहता, बड़ा टॉपिक है, बात कर सकते हैं. कितना बात करोगे मैं बात करेगा, because I'm working on that, so I can tell you. मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में, मतलब जैसे आप जो कुछ भी बताते मैं अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कहीं ना कहीं. That's good of you, ना, you are that talented. या क्योंकि जैसे मैं अभी साउथ के ब्रोकर है उनके लिए काम करता हूँ, तो जैसे मैंने अभी जो आपसे जो आर्किटेक्चर के बारे में जो डिस्कस किया, अगर आप इस पे आपकी मोहर लग जाती तो मैं रात को काम करता इस पे. I don't do things in rush. I think a well-researched approach is better. Like अभी मेरे को कुछ करना है, then I will start with the a very easy way. Then I'll drive myself to the harder way, and then go with the most efficient, most resource efficient. That's have multiple iteration of your own code. पहले भी spaces में ये बताया था. Right. Then only you'll get to reap the benefit of the codes. Anyways, if there's anyone else who would like to, सर मैं आपको DM
आपको डील करता हूँ. Okay. ओके, थैंक यू सर. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, so my question is, so आप जो भी अपना strategy platform चलाते हो, and so how many of your alphas are something that would not work with a lot of slippage, so that your execution matters more? या फिर do you also run some alphas where you can just put one order a day, like VWAP executed throughout the day, and किसी like average price पे मिल जाए तो you can still make money? It depends, मेरा कोई strategy platform तो नहीं है, but what we do for our own trading, we have intraday strategies as well as positional strategies, but 90% are positional strategy, and only 10% goes into intraday. That too, it's not mandatory that every trading day will be traded. If the signal is not there, the trades will not happen. And Right. for the intraday, we definitely look for the fill prices and definitely drive towards a better execution. For the positional, we don't go for that. We are not concentrated to get to the exact fill. If a near fill Got it. also we got, then is good for us. We do monitor the limit order book continuously. We monitor the L2 book spreads, and for my own sake, what I did, Zerodha and IFL both are providing this L3 data, the 20 order book on their web platform, and I think their mobile platform also. What I did, I tried to aggregate the data, and I clubbed that data with the L2 data to have a broader L2 book to see how people are positioning themselves up to the level of 20 bid and 20 ask, and try to get a weak point of that, and try to calculate my impact cost upfront. So when we punch order, we most probably know that what is going to be the impact and where we'll get a fill. I see. Okay, so just one follow-up question. So let's say I want to run something on a daily/weekly frequency. So should I invest a lot of my time in writing good execution, or should I just focus on alpha and just sit on the bid or sit on the ask throughout the day? Yeah, a better alpha will always dominate the execution. Execution is ऐसा नहीं है कि मतलब execution is not needed. A better execution sometimes for certain different strategies will reap you more benefit. But if your alpha is for longer time period के लिए 4 दिन you are going to capture 400-500 point move, then a slippage of 10 points will not matter. Given your quantity size is not obnoxious like 1 lakh, 2 lakh. It depends upon your position sizing as well. So upfront we need to know what is the strategy and what will be the impact of slippage on the size, what size we are going to play, and what is the time frame, or what are the probable reward points that we are looking for. Then only we'll get for a fair we get a fair assessment of whether execution should be concentrated rather than the alpha. Got it. In market में कुछ भी static नहीं है, nothing. Accordingly, we have to adjust. Kapil sir, actually one last question from my side. This is the follow-up question from the Sanju. So actually we will use async to get the data from the website, and we use threading to access the data within our system, right? So it's the best way. No, what I have said is the industry standard. But the industry standards, the industry has moved completely asynchronous code for the network, for the network stack, and to deal with the file-based IO, threading is the best. And for any calculation of that sort,
blocking code is the best, when where you block and let nothing touch your code. So async means like given a call and it will give you an future, like okay, जब भी डेटा आएगा उधर से आपको बता देगा सर्वर से डेटा आ गया. तो उससे क्या है कि अभी 1 सेकंड में मैं मिलियन भी भेज सकता है रिक्वेस्ट. Then the next line of your code will not be blocked. What happens? Like I made a loop and sent, and thereafter my program will continue from that point. This is asynchronous code. Like it doesn't bother response aaya ki nahi aaya. When the response will come, the program will interrupt you and give you the required data. That's why we use await data. In blocking codes, what happens? Until unless that one line is finished, you are not going to proceed with that second line. आप stuck है one line पे, आपका program hang किया हुआ है, समझ लो. Yeah, the cause is right, sir. Actually, this order book, right? So most of the order book methods, they're taking too much time to respond. Means even if we are not placing any orders, if you want to go fetch the orders, right? His current today order, so they will take more than a minute or 2 minutes to respond. ये which broker यार ये किस? Angel broking, we have issues with the angel broking. 1-2 minutes is too much. What I'll suggest, bus. Abhi always try to get the endpoint of web API as well. So the most of the people's what they do, API, they will create free API and they will give you, and the worst server, to save the resources, they'll put all sorts of nonsense things. अभी Alice Blue में कुछ किया है इन्होंने, historical data में complete, मतलब I got that irritated right there, that from that day I have never looked back, never logged in. So the people do this, to flash to the masses, सबको customer base चाहिए ना. So free API, everybody will come, everybody will flock towards, and then whatever server they will give, and they will think like you will test with your live money. Don't do that. What their bread and butter is, the face value is their web API, because web API anybody can go and check क्या हो रहा है. To get an API, one has to get an API key, and someone has to inspect and see the performance of API. They have to do all that sort of API thingy. But if somebody all of a sudden want to check the performance of their, a terminal, suppose a third or a regulatory will come and check, they'll check the web API, everything is working. So what they try to do, they try to encounter the masses with their web servers, the server that is tackling their web UI. So that will be more fail-safe method. I think it shall be treated as a fail-safe, more performant, more user catering. Okay. So what instead of waiting for that 1 minute, why don't you poll 10 times the web API, web order book? Yes, actually, I'm looking for the alternative. Like you said, I have to scrap nothing. the website. It's just required a right click and click on inspect, go to network tab, you'll get to know all the endpoints. If not required, what do you do is download the extension called Resource Saver from Chrome or Edge, and go to inspect element, click on the network resource, click download all the sources, and later in the line study all their source code. Just you regex the HTTP and take out all their API endpoints, whatever they are hitting. Compare with the official API endpoints. Try to merge. Same code में डाल दो. If that is failing, if that is waiting for 1 minute, meanwhile I'll call this one. किधर से भी response आना है. अभी मोबाइल में एंजल ब्रोकिंग का ऐप खोलेगा तो आपको ऑर्डर बुक दिखता है ना, साइमल्टेनियसली आपको उधर एपीआई से नहीं दिख रहा है. तो अभी आपको ये तो पता चलेगा किधर दिखता है. अभी इधर दिख रहा है तो इधर से ही डेटा लेंगे ना. मेरे को डेटा चाहिए. I am the customer. Yes, yeah. So what is that Chrome extension? The Chrome extension, I told you, resource saver. Resource saver. Resource saver, what it does, that it just give you a compressed zip file of their sources. Okay. Okay. सर अगर वेब वाले अपना अगर उस एंड पॉइंट पे हिट करेंगे तो अपने को दोनों जगह लॉगिन करना पड़ेगा. Login कुछ मत करो. What you do, just when you will right click and inspect, you will get that token, or you do you write a user script that will save the the web token
in a file, and in your program you read that a web token and pass it through your program. So there will be two token. One will be official API token, whatever authorization token, and one authorization token of your web session. Either have a user script, either there are multiple ways to keep it updated. I can't go into much of the details, but once I think last year I made a program using Playwright, which can log in through Python code, and one more Python code was there. Using that data, it can give you a web. It can inject the cookies in the browser to open you the session. I think it is available in my Telegram channel. I can forward the code to you to test. Many has tried. I think Veera, Sanju, maybe they have tried. So this is the kite bypass file, sir. Like similar. No, kind it's of... something. It's something else. I'll give it to you. Just ping me on Telegram. I have shared it for free for everyone. So I'll just forward it to you. सर ये जो आपके साथ बात करी इन्होंने वेब सॉकेट ट्राई किया है एंजल का? किसने? जो भी आपके साथ बात कर रहे थे. I don't know who is speaking. Can you just answer this question, please? Actually, now it is Sanju who is speaking, sir. Earlier it is. नहीं, मैं नहीं था. Oh. Okay, I think maybe he has left. Maybe I don't know. If he comes around, then we can. Sanju, if you're there, where is this Manjesh? मैं यहीं पे हूँ सर. मैं यहीं पे हूँ सर. भाई आप एकदम चुप है. मैं सोच रहा हूँ कि मैंने I have took over your space. अरे नहीं, आपके जो जवाब आ रहे थे फिर मुझे बोलने का मौका ही नहीं है. अब मौका के अलावा at least let me drink some water. नहीं, बीच में कुछ सवाल आए थे मेरे लायक, छोटे सवाल, लेकिन उसमें नए क्वेश्चंस आ गए और फिर वो बीच में रह गया. Anyways, I'll just take 1 minute. I'll just come. जी सर. एंजल वन के बारे में कौन पूछ रहा था? एंजल वन का कौन पूछ रहा था? नंदू जी. हाँ, that angel, that is me. So जो हम कल ट्राई कर रहे थे. हाँ, वही मैं पूछ रहा था. कोई है तो किसने किया है एंजल का वेब सॉकेट से? सॉल्व नहीं हुआ अभी तक? अरे नहीं हुआ. वो रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना उनको 2 सेकंड से, तो भी वो मेरे को ब्लॉक कर रहे हैं. एपीआई रिक्वेस्ट ब्लॉक कर रहे हैं. लेकिन मेरा डाउट ये है कि किसी बंदे ने ऑलरेडी, मतलब जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसको ऑलरेडी पाइथन का बना के दिया है और उसका एंजल ब्रोकिंग का काम कर रहा है. तो उसे पाइथन नहीं दिया है क्या? नहीं, उसने उसको इनक्रप्टेड दिया है. ओके, बहुत बढ़िया. नहीं तो ऑर्डर फीड की बात कर रहे हो या कुछ और? वेब सॉकेट की बात कर रहे हैं. वेब सॉकेट की बात कर रहा हूँ. और वेब सॉकेट से ऑर्डर फीड. वेब सॉकेट से ऑर्डर फीड जो हम कल ट्राई कर रहे थे वही ना? हाँ, तो वो मैं लेटेस्ट आपको फाइल भेजा हूँ, उसको ट्राई करेंगे एक बार. 1 मिनट में डाउनलोड करता हूँ. उसमें नहीं, अभी तो मैं सिस्टम पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे को भी ना जब तक वो पूरा नहीं हो जाता बेचैनी रहती है, तो इसलिए उसको पूरा करके मानेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं. अब धीरे धीरे मैं उसको और ज्यादा ट्राई कराना, तो पता चला कि शायद उसका एपीआई जो था ना वो मैं गलत डाल रहा था, तो इसलिए मैं चेंज करके भेजा था. ओके. तो उसको अब वही है, मैंने इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं है, तो उसमें शायद या तो हेडर में दिक्कत है या फिर उसका जो क्वेरी पैरामीटर है उसमें कहीं पे दिक्कत है. लेकिन फिलहाल जो अभी प्रॉब्लम पता चली है वो यूआरआई की पता चली है, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया है. अब उसको बगैर हेडर के हम कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या एरर आ रहा है, और फिर भी एरर आता तो फिर हेडर के साथ कनेक्ट करके देखेंगे उसको. ठीक है ना? तो इसलिए मेरे को ये काम आपसे करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लॉगिन है नहीं उसका. मैं आपको सेंड कर देता हूँ. नहीं, वो फिर वही सारा, वो मुझे इतना वर्चुअल एनवायरनमेंट का आता भी नहीं है ना. क्या है कि मैं उसकी डिपेंडेंसीज वगैरह डाउनलोड करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, तो वो मेरी वाली को ना कबाड़ा कर दे. अच्छा सर. ओके जेंटलमैन सर, एक डाउट और था सर. सर मेरे को पता नहीं मेरे मतलब लैपटॉप में ये क्यों हो रहा है. जैसे मैं पाइथन की कोई स्क्रिप्ट, जैसे मैंने एंजल ब्रोकिंग के इंस्टॉल किया है किसी की भी की,
या जैसे मैं ML का कोड करता हूँ, तो सर मेरी मतलब मेन जो पाइथन है वो कहीं और कहीं इंस्टॉल है, और जो पाइथन की जो पिप है वो मेरे यूजर में मतलब स्क्रिप्ट यूजर में जाके इंस्टॉल होती है। Which operating system are you using, my friend? सर मैं मतलब वेब ये आपका विंडो भी काम में ले रहा हूँ और लाइनक्स भी काम में ले रहा हूँ। The thing that you have to check is path, your environment path. What happens, so suppose I am having installed 3.10, 3.11, 3.12, but my default Python is 3.10. Why? Because the first entry is in my path is the folder location of Python 3.10. Then the second location is 3.11 and third location is 3.12. What I will do, I'll just replace the first line with location of Python 3.12 and make the 3.10 on the third position. And the next time I'll open my shell, the default Python will be 3.12. It depends upon the entry. What they do, whoever is first is the default. If multiple are entered in the path. आप जब भी विंडोज में प्रोग्राम पाइथन का या सेटअप इंस्टॉलर इंस्टॉल करेगा, इट विल इंक्लूड itself into the path. चेक मार्क भी रहता है. Then what it does, previous entry को delete करके अपना एंट्री मार देता है rather than appending. तो आपका डिफॉल्ट चेंज होता रहता है. Every time you install a new version, वो पुराना रिप्लेस करके आपका पाइथन का पाथ चेंज कर देता है. तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो कंप्यूटर पे, गो टू कंप्यूटर प्रॉपर्टी, सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल, आपका फोल्डर लोकेशन डाल दो, हो जाएगा इजीली. सेकंड थिंग इज राइट ए पावरशेल स्क्रिप्ट और बैश स्क्रिप्ट. मैन, एवरीबॉडी शुड डिफैक्टो स्टैंडर्ड मान लो. आपका पाइथन प्रोग्राम शुड नॉट स्टार्ट विद python.py. बेटर है कि एक शेल प्रोग्राम लिख लो and invoke from that. Like मैं अगर विंडोज में करता हूँ, I write initiate या process.ps1. In that, what first line will be set path of that directory from which I want to invoke the Python with. In Bash shell program, it's very easy. Just you have to write shebang exclamation hash and the location of the Python, and it will take that Python and execute your code. Life बहुत easy हो जाता है. और सर आप लिनक्स का कौन सा वर्जन मतलब कौन सा काम में लेते हो? मैं लाइनक्स कोई भी मतलब मीनवाइल जब मैं यूज करता था तो मैं लाइनक्स फेडोरा यूज किया था. फेडोरा का जो भी नाइटली वर्जन रहता है वो यूज करता हूँ. व्हाट आई डू, आई टेक दैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सारे कंपोनेंट हटा के जो मुझे कंपोनेंट चाहिए वही यूज करता हूँ. एंड आई डोंट यूज द कर्नल दैट कम्स विद द any distribution, be it anyone. I try to compile the kernel myself by cloning the repo from GitHub, or then I tweak the TCP congestion control, BBR2 I will and the scheduler I will try to optimize and make it real time. So it's completely according to suit my need and to suit my system need. Okay. Because अभी generic program रखने फायदा क्या है? मैं डेवलपमेंट के पर्पस से पूछना चाहता हूँ, जैसे मतलब वेबडी में जैसे मतलब कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? भाई आप देखो, इफ यू वांट कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब फर्स्ट क्लास सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेट, आपके एक सर्च से आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, देन गो स्टिक विद उबंटू. ओके. अभी थोड़ा प्रो हो गया, आपको पता है कि क्या कैसे कर सकते हैं, देन गो विद फेडोरा और डेबियन नाइटली. अभी आपको और ज्यादा एडवेंचरस होना है, देन गो विद एनी आर्च लाइनक्स वेयर एवरीथिंग यू हैव टू कंपाइल योर ओन. अभी उससे भी ज्यादा जाना है तो वही करो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लो, उसका सब निकाल करके अपने हिसाब से मेरी तरह लाइनक्स का कर्नल खुद कंपाइल करो. ये 4 स्टेज है, बट फर्स्ट क्लास सपोर्ट विल नॉट बी देयर. अभी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, आई हैव टू सॉल्व माय ओन, मतलब मेरे को ही करना है, उसका आंसर मिलता ही नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा. अभी इफ यू गो विथ उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन, अभी you will get 10 or 1000 plenty of tutorials from DigitalOcean and LogRocket, or so many websites are there. They'll give you ready-made solutions if you're stuck somewhere. So it depends upon the use case. अभी कोई भी मेरे को when it comes to programming and coding, nothing is best, nothing is worst. Everything is having its own trade-off. अभी किस ट्रेड ऑफ के साथ आप लिव कर सकते हो, मतलब रह सकते हो, वो इट डिपेंड्स अपॉन यू. सो कोई भी बुरा नहीं, सब अच्छा है. राइट. थैंक यू. Hello. Hi. Hello, Savi sir. I just wanted to ask, like,
अभी वो एलपीपी जैसे इंट्रोड्यूस किया एनएससी ने, राइट? सो जैसे प्राइस लेट्स से फ्लक्चुएट होता है मोर देन 40% और सम क्राइटेरिया गिवन, तो वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, राइट? सो आप इसके लिए कुछ सेफगार्ड मैकेनिज्म यूज करते हैं अपने कोड में, इस टू मतलब जिससे ऑर्डर रिजेक्ट ना हो या फिर मार्केट ऑर्डर पे वो शिफ्ट हो जाए, समथिंग लाइक दैट? नहीं, अभी लिखा तो हूँ मैं एलपीपी को कंप्लीटली कोड में राइट किया हूँ, बट आई हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इट, क्योंकि अभी उतना दूर का रेंज का हम लिमिट ऑर्डर डालते ही नहीं। एलपीपी मैकेनिज्म मैं पूरा वो पढ़ा पीडीएफ और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट किया था। इजी है यार, थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन ही है, तो करंट प्राइस और प्रीवियस जो भी था उसका बेस लेकर के निकाल देना। बट टू बी ट्रूथफुल, आई हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड इट, बट कोड इज रेडी। तो जब भी मुझे आई विल फील द नीड, आई विल जस्ट ऐड एज ए when I write code, I write code in a style that is modular, so I can attach parts and I can remove parts, and the code remains the same. Got it. Also एक चीज और पूछनी थी, आप जैसे अभी रिसेंटली एक्सपायरी थी स्पाइक्स, एक्सपायरी में गामा स्पाइक्स काफी ज्यादा होते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जैसे अगर एसएल ऑर्डर यूज करते हैं तो इट मोस्टली ट्रिगर्स, so instead of that many people are waiting for 1 or 2 seconds and then seeing like that if the price sustains then only they will execute a market order, but in that case there would be a large slippage in case of actual move, right? So yeah. By the time they move, they wait for 5 seconds, and flashly the ticks move to 30 or 35 point. There will be huge slippage. वो तो risk है ही है. Plus, what you can do, what I like what this Zerodha suggests. The limit order plus certain amounts to convert that is a market order while giving you the protection of slippage. Like 80 पे trigger था and I put market at 82, तो आपको ज्यादा से ज्यादा होगा तो 82 ही जाएगा, ₹2 से ज्यादा आपका स्लिपेज नहीं जाएगा, पंच कर देना है rather than waiting for 5 seconds. हम लोग ऐसे ही करता है. This is suiting us. What is suiting us? We have taken a risk of ₹2, correct है? अभी क्या है, when my SL order triggers 80 पे ट्रिगर होकर 82 पे मार्केट ऑर्डर चला गया, लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया, एट दैट टाइम एलटीपी गोज टू 79, आई विल लूज 3 पॉइंट्स, बट दैट इज व्हाट आई विल लूज. आई विल नॉट गो लाइक फ्री ट्रेड, बड़ा ट्रेड और बड़ा स्लिपेज मेरे को नहीं मिलेगा. एंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन का गारंटी भी रहता है. इफ नॉट देन प्रोग्राम में ये है कि अगर नहीं होएगा तो कंटिन्यूअसली उसको चेस करेगा अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. Okay, so in case of stop loss miss होता है, अगर 2 पॉइंट स्किप हो जाता है तो then you will fire market order, right? No, I'll put a limit order with price above or below than the मतलब आपका which side you are on. Like if I'm on a buy side, the trigger will be less and the order price will be above that, like 1-2 point. तो वो market order में convert हो जाता है with a guarantee of executing up to that point. Like 80 पे stop loss था और 82 पे डाल दिया तो मार्केट पे तो 80 है रेट. अब मार्केट ऑर्डर को पास में भाई ये कौन बंदा है जो 82 में बाय करना चाहता है, तो इमीडिएटली वो ऑर्डर फिल हो जाता है. somebody else will get ₹2 benefit. बट मेरे को ये 2 ही पॉइंट का गारंटी दिए, ऑर्डर एग्जीक्यूशन का भी गारंटी है और 2 पॉइंट का मतलब आई हैव टेकन दैट रिस्क कि मेरे को 2 पॉइंट दे देगा. जस्ट लिमिट ऑर्डर से मार्केट ऑर्डर में है इसमें कि अगर आपने जैसे 2 पॉइंट का बफर रखा है, राइट, लिमिट और ट्रिगर में, तो कैन देयर बी अ केस जिसमें 2 पॉइंट मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा, हाँ, वो स्किप हो सकता है ऑर्डर, हो सकता है. नेक्स्ट टिक में कैन बी 30-35 डिपेंड्स अपॉन द हाउ द मार्केट इज बिहेविंग. दैट्स व्हाट आई सेड ना एट द वेरी स्टार्ट. इसके साथ भी चेजिंग मैकेनिज्म है. इफ दैट मिस देन विल गो एंड विल चेज द मार्केट एंड विल गेट इट डन. मतलब निकलना है तो निकलना है, देयर इज नो डाउट. उधर छोड़ने का नहीं. 10 चेज मतलब मैक्सिमम 10-7-8 लिमिट लगा के जो भी चेज का हमने सेटअप करके रखा है वो लिमिट 7-8 में वो मैक्सिमम निकाल ही देगा. And we not only chase, I told you ना, we see continuously monitor the L2 books. तो अभी 20 तक तो मेरे को मालूम है कहाँ तक चेस करेगा. I know the 20 asks, right? I know the 20 bits as well. तो अभी max कहाँ इंटरेस्ट ये and what is the mid point, impact क्या आएगा उतना मालूम रहता है. अब बहुत ही खराब हो जाएगा तो कह नहीं सकते, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, but we'll come out of it. इम्पैक्ट कॉस्ट पहले से मालूम रहना है. मतलब इन्फॉर्म डिसीजन इज बेटर देन ब्लैक होल में मार्केट ऑर्डर डाल दिया. आई डोंट बिलीव इन दैट. एटलीस्ट यू शुड गेट टू नो अपफ्रंट इम्पैक्ट कॉस्ट आपको मालूम होना है. गॉट इट. या थैंक्स. सपोज बेस्ट आस्क पे फिल नहीं हुआ, देन द 10th आस्क
should be your fill price, if not Right. 20. Then you know So what were the quantities and what were the ask price on that. You know, you can calculate the impact cost on taking average of all that. And what was your so position charging of a square yeah. of. So every time you like every second you like keep on fetching the bid ask and like up No, to 10. every in the WebSocket, what I do not use the vanilla SDK given by all the brokers. I built on top of that. Like if Kiteticker is there, my will be like Shabbir Kiteticker. So the WebSocket parsing itself, when the tick is passed, everything will be passed according to my need. अभी वही नहीं रहेगा जो डिफॉल्ट सेट ब्रोकर आपको बोल दिया कि आपको इतना ही मिलेगा, नहीं, उधर ही सारा. When one tick data comes, it comes with the mid price, best bid, best ask, what will be the impact cost according to my current open position. वो सब मेरे हिसाब से डेटा मिलता है. तो पर सेकंड साथ में जैसे टिक आता है वैसे ही मेरा इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ पार्ट्स होके मुझे मिल जाता है. आई शुड नॉट वेट फॉर अनदर टिक. कैलकुलेशन साथ में होना है, बाद में कैलकुलेशन करके फायदा नहीं है ना. ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हाट आई नीड पर टिक शुड कम पर टिक, नॉट आफ्टर द टिक. और वो सब सर आपके उसकी वजह से पॉसिबल है, वो जो आपने डेटा क्लासेस बना के आपने भेजी थी वही होंगी. Correct. You have to implement your own data classes, taking the data and make your own calculation from that. और So, वो that's how you can aggregate also. ORJSON, why I use, because it's more efficient and it can help you do zero copy deserialization plus pointers. So वो सब benefit Python में मिल जाता है तो easy हो जाता है. लेकिन ORJSON का फिर वो यूज केस और वो फॉर्मेट वगैरह कमांड्स वगैरह सब अलग होंगी, वो दोबारा से सीखनी पड़ेंगी. No, this इतना भी मुश्किल नहीं है. When somebody gives you a ready-made Python library out of Rust code, he has already did the most of the hard work. अभी आपको smart work करना है, तो थोड़ा smart work upfront, whatever time you will spend, it will definitely worth it. एक टाइम का थोड़ा मेहनत है, but when they have given a files ORJSON, all the back compatibility they have taken into consideration. थोड़ा time का, because they use Chrono and we use this Python का date time उतना high definition नहीं है, तो there are certain difference. Otherwise similar. उधर भी JSON.load से इधर ORJSON.load. So what you can do at the time of import ORJSON as JSON. तो आपका existing code में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, except one or two place. So उधर भी JSON dump करता था, इधर भी JSON. How you do import pandas as PD? So उधर polars को भी PL में करके लेके आ गया ना. So this thing you can do. अच्छा सर, एक ये कोई ब्रोकर है जिससे 5 ms का पिंग आ रहा है मेरे को, और किसी ब्रोकर से 20 ms का पिंग आ रहा है, तो कौन सा वाला अच्छा है, 5 ms वाला या ये पिंग कुछ अलग ही चीज होती है? नहीं, डिफरेंटली जो लीस्ट है वो अच्छा है, बट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फायरवॉल और if they are using Cloudflare or not. Cloudflare में क्या है, there is one term Argo tunnel. What it does, depending upon the traffic, current traffic, like मेरा suppose I am pinging Cloudflare, my sometimes I get connected to Lucknow, some kind connected to Delhi, some kind connected to Mumbai. तो कभी कभार क्या है, दिन में पीक कंजेशन के टाइम पे द राउट इज कन्वर्टेड डायरेक्टली टू मुंबई. तो अभी 12 मिली सेकंड मुझे अगर मिल रहा है पटना से लखनऊ का, देन ऑल ऑफ अ सडन इट गोज टू 42 ms. कभी क्या है, टू गेट इट यूनिफॉर्म, टू गेट अबव ऑल दिस, प्लेस ऑन द नियरेस्ट, लाइक गो टू एनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज दे हैव फैब्रिक्स ऑफ 100 Gbps इंटरनल लाइंस. यू विल गेट द लीस्ट लेटेंसी. आप किसी भी और मेथड से लीस्ट लेटेंसी नहीं कर सकते हैं जी, इम्पॉसिबल. नहीं, किस क्लाउड प्लेयर पे हमें जाना है, ये हमारे हाथ में होता है. आप किसी भी क्लाउड पे जाओ ना, किसी गूगल क्लाउड ले लो, एज़्योर ले लो, दे आर ऑल हैविंग मुंबई सर्वर्स. अच्छा. So there are two things, the relations between business to business and business to customers. B2B always prevails, हमेशा upper hand रहता है. They have the highest bandwidth, they have the upper hand, they have the highest priority. Your packet priority and their packet priority, they are having the highest priority. आपसे पहले वो जाएंगे, वो ज्यादा नहीं. जैसे
हाँ, जैसे आज हम पिंग किए थे तो वहाँ पे 200 ms पिंग दिखा रहा था, लेकिन मेरे लोकल से ही मेरे को उसका 20 ms का पिंग आता है। डिपेंडिंग अपॉन, दैट्स व्हाट आई सेड, क्लाउडफ्लेयर का राउटिंग है, डिपेंड्स अपॉन कंजेशन, आपके जो आईएसपी से क्या राउट वो दे रहा है। कभी कभी क्या करता है, मुंबई से दुबई भेजेगा, दुबई से राउट करके वापस मुंबई लेके आएगा, देन यू आर हॉपिंग 35 मिलीसेकंड प्लस 35 मिलीसेकंड 70 मिलीसेकंड। और आपका क्या है, आपका सीधा मान लो यहाँ से लखनऊ से कनेक्टेड या दिल्ली से कनेक्टेड है, तो यू आर ऑन द शॉर्टेस्ट राउट। डिपेंडिंग अपॉन आपके आईएसपी से उस सर्वर का कितना कंजेशन है, अकॉर्डिंगली इट राउट्स ऑटोमेटिकली। आर्गो टनल करके आप सर्च करोगे Google पे Cloudflare Argo, you will get to know the details. Even there was huge discussion on this topic on this Kite Dev forum. I think back in 2014 of 2017, I think 17-18. मैं मोबाइल से पिंग करता हूँ तो बहुत ज्यादा पिंग आता है, लेकिन मेरा वो जो आईएसपी है उसका पिंग गूगल को करता हूँ 3 ms आता है, और उसको काइट को करता हूँ तो 5 ms आता है। हाँ ठीक है ना, तो अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन what your ISP is having, it is having the nearest edge location of CloudFront. People pay for this type of latency, you know, to get the least latency. So if you are getting it for 3-5 milliseconds, fire करो order यहाँ से, because if you go to clouds also, you'll get I think 1 ms or less than 1 ms. But if you are getting in free 5 ms, very good ना। हाँ वही मेरे को भी यही महसूस हुआ। हाँ मुझे भी यही महसूस हुआ, इसलिए आपसे कंफर्म कर लिया मैंने आज। इसमें कुछ अलग से ही अजीब से ही है मेरा ये आईएसपी वाला। Anyways, it can happen. Anyone else? Thank you, Mena. Yes, hello, hi sir. मैं बोल रहा हूँ। Hi Meng, how are you? बढ़िया सर। सर बैक टेस्टिंग स्ट्रक्चर हम पाइथन में कैसे फास्ट कर सकते हैं? अभी मैंने लिखे हैं तो अभी बैक टेस्ट करता हूँ तो मेरे को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अब जैसे एल्गो टेस्ट और ये स्टॉकमोक जैसे प्लेटफॉर्म है, इनके सेकंड्स में डेटा बैक टेस्ट हो जाता है 4 सालों का। This question has been asked, I think. I have interrupted you. Continue. Please complete your question, then I'll do. हाँ, तो बेसिकली मतलब डेटाबेस का स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन होना चाहिए कोड लेवल पे, तो किस हिसाब से लिखा होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करिए। You have to have an organized data at first. Organized data क्या है? If it is indexed very well, sorted, then you know all other programs can take a benefit out of it. If you know your time series is perfectly organized in a sequence manner, and you wrote your code and to load the particular data from this time to that time from pandas, so when they will make an query, it will be very easy to get the data from indexed things like unorganized. Or if it is organized, always it will be very fast in terms of loading the data. Then नहीं, वो जैसे मैंने आपसे पूछा था टेलीग्राम ग्रुप पे कि पैराक्विट फाइल में आपको 2-1 महीने पहले पूछा था, आपके चैनल से मैं डेटा लेके, तो जैसे आपका पैराक्विट फाइल आती है तो वो डेली की आती है, तो मैंने एक वैसे पैराक्विट फाइल बना रखी है, तो उसमें पूरा डेटा पेंड कर रखा है, तो उससे लोड करके स्ट्राइक अलग होगी, एक्सपायरी अलग होगी, जैसे सिंबल आते हैं, तो जो इन्फो मेरे को चाहिए वो करके रख लेते हैं। बट अब क्या वो नंबर ऑफ टेक्स्ट इतने सारे हैं तो उन्हें प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, तो मैंने जैसे नंबर भी ट्राई करा। नहीं, you are having paraquet, then you made a db out of it, or you are keeping it as a file? As a file, db फाइल, वही जैसे आपकी आती है ना वैसी, whatever, like dot paraquet was a you are just keeping as it is in a folder, right? And the folder is organized in year, month, date, like that, right? Right sir, right. Sorry. Then what in your code, what you can, when you are you have to make a class to translate your from to period in a folder structure, folder tree. Accordingly, it just has to go to that particular folder to that depth. Programmatically you have to generate the path from your from or to date or timestamps. Then use the lazy frames. Lazy frames, when it comes to polars, it will be like scan CSV. What it will do, it will only it will make a quick search on the first column or timestamp column on the file, and it will start reading the file from that line onwards.
from where from which point you want to read. So बहुत easy हो जाता है. Suppose like my file is having 22,000 or 50,000 lines, and at the very first what this program will do when you invoke the lazy frame, it will just load the file and read the make a quick find of that timestamp, and it will return the line number, and from that line number it will start reading it till it reaches to the last timestamp from till which you want to load the data. So अभी क्या है कि वो 50 MB से घट करके 10 किलोबाइट का डेटा आपको रीड हो गया पर्टिकुलरली और तुरंत आ गया डेटा. बट सर तो जब लेजी रीड करने के बाद हमने तो रीडिंग टाइम में बचा लिया, अब रीडिंग के बाद जो मेन आता है वो आता है हर एक टिक पे. लेट से मैंने 920 की स्टडीली बैकटेस्ट करनी है, तो कॉल पुट का ओपन कर ली, उस पर हर एक टिक पे कितना पीएनएल गया, मेरा प्रॉफिट हिट हुआ नहीं हुआ, डे का भाई टारगेट है मेजॉरिटी सर, तो ऑफ फिर योर नॉर्मल calculation time super fast होता है man. See, all this calculation done on majority of the calculation will be done on the stack memory, जो सबसे fastest memory that lies next to the CPU. So this majority of your time is spent in reading data from IO. एक बार वो data आ गया IO से, then you can have all this vectorized calculation. Use NumPy and all. Calculation बहुत easy है. You try yourself. What you do, you measure the perf counter, you use this time.perf counter.ns, do a read operation of file, and do at a different code, you do calculation on the loaded data and try to compare. You will find maybe 1:100 performance ratio. उधर 1 second लगेगा तो इधर 10 millisecond लगेगा. Calculations are super fast. IOs are super slow. अच्छा, तो बेसिकली पहले जो तो डेटाबेस अभी से most रीडिंग what टाइम है you वो रिड्यूस पहले. correct है. ओके ओके ओके. Finding and going to that depth. अभी इसलिए लोग database use करते हैं. Not only database. When you talks about this enterprise level, platforms, Algotest and you name it, anyone. What they do instead of that DB also, they make a hard cage, different cage. What they do, they load the data itself in the memory. It's run सुबह उठ करके when a server is running, all the data is already there in the hard cage. So आप जैसे करता है that you get the data from memory. It doesn't touch the database itself. अच्छा, तो बेसिकली फिर लूपिंग So वाला what टाइम रह जाता what है. they have analyzed the pattern, कि most people come and they use this from date and to date. So उतना data वो memory में हमेशा रहता ही रहता है. So that is what hot cache means. Hot means तुरंत आप जैसा किया memory में data है तुरंत मिल गया. फाइल जाके खोज करके ओपन करके डेटा निकालना और मेमोरी से डेटा, इट विल ऑलवेज बी फास्टर, राइट. बट एक और पॉइंट है, राइट, एल्गो टेस्ट एंड स्टॉकमार्क डज ऑन 1 minute डेटा, राइट? सो 1 minute कैंडल्स आर वेरी लेस. आल्सो अगर हम 1 second मतलब टिक पे कर रहे हैं, देन अगर 1 second में 5 टिक भी मान ले, देन इट विल बी 300x. सो आई थिंक या सो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि we should load the data first in the memory, right? Either the cache or something. Then No, I'm not suggesting. I'm just telling. He asked how they are doing it. So that is how they were doing it. Right. When you keep things in memory and whenever you need, you just take it. It's not just like a variable x equal to 1. आपको 1 हमेशा x कभी भी कॉल करो तो 1 मिलेगा. आपको वो फाइल से जा करके रीड करके x नहीं निकालेगा. जो हर एक रिक्वेस्ट पे बेसिकली जो बिजनेस लॉजिक है वो रन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ बार बार अभी जैसे हम लोकली रन करते हैं तो डेटा लोड करते हैं एंड देन फिर उसे प्रोसेस करते हैं. Yeah, definitely. It's on their interest ना. If you are running, suppose keep yourself in their position. आप एक AWS server पे लिए हुआ एक instance, then you have to pay for every in and out transactions, every invocation. So suppose everything is in memory, there's no charges to keep things in memory, right? Nothing. Whatever the maximum capacity within that limit, nothing is there. So every request, only the outgoing charge, the network charges only you have to pay. There's no charges like if I suppose I put my database in S3 and I try whenever a request comes, then I will pass that request. Then I'll go call S3, भाई मेरे को ये data दे दो इतना particular time frame. Then that itself will take time. Then it will return to that. Then I will return to you. इसमें लग जाएगा भाई time. हो सकता है data आपको मिले भी नहीं, बीच में drop हो जाए. Was that clear?
राइट या सर डेटा तो मेमोरी में मतलब रैम में स्टोर रहता है ना जो वर्चुअल होती है, तो सर उसमें कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं मतलब? देखो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, आई कैन टेल यू द नंबर, बट आराम से मतलब एक दिन का पूरा टिक 3-4 GB में डाल सकते हो, मतलब 100-400 इंस्ट्रूमेंट है तो। मतलब जैसे सर अगर जैसे मैं मतलब अल्गो टेस्ट का अगर जैसे जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो कि अगर उन्होंने 4 साल का डाटा है, अगर जैसे मतलब वो 920 स्ट्रेडल का बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब उनकी स्ट्राइक प्राइस वो शिफ्ट करते रहेंगे हर टाइम की, तो उनको कितना डाटा लोड करना पड़ेगा? With all strikes, I don't think so it will exceed more than 7, 8, 9 GB 1 minute time frame के लिए, क्योंकि देखो सारे स्ट्राइक, not all strikes are liquid. If I say, because I save data when check, almost like 5 to 6 strikes में ही आपको 375 कैंडल भी मिलेगा 7 स्ट्राइक्स में. मान लो फिन निफ्टी ले लो, maximum 7-8 strikes is having 375 candle. If you go other strikes, maybe in that day they'll be having 1 or 2 candles as well, because there was no price movement. Why to generate candles? The price has not moved at all. Nobody has traded. It was illiquid. So utna data nahi rehta when we are considering. Those who are dealing with the data, they will understand what I'm talking about. सर एक चीज और, जैसे हमने अभी बैक टेस्ट की बात करी कि उनका मेमोरी में डेटा बड़ा होता है, तो लेट से अभी मैं सिर्फ 2 कंडीशन चेक कर रहा हूँ. अब बैक टेस्ट के वो जो टाइम है वो नंबर ऑफ कंडीशंस पे भी तो इंक्रीज करेगा ना, कि जैसे मैंने पहले लेट से 1 साल का डेटा मिनिमाइज करके 1 मिनट में कर दिया, बट तब मैं सिर्फ कंडीशन कर रहा था 2 चेक, अब मैंने कर दी 20 कंडीशन लगा दी. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वो बढ़ेगा, तो जो एग्जीक्यूशन का टाइम है, बैक टेस्ट का जो टाइम है, वो भी ड्रास्टिकली बढ़ेगा या वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा? ज्यादा नहीं बढ़ेगा. मेन IO टाइम है यार. सपोज 2 वेक्टराइज्ड कैलकुलेशन वी आर डूइंग इन 1 सेकंड, अभी 4-5 कर देगा. व्हाट दिस प्रोग्राम डज, इट ऑप्टिमाइज योर ओन कोड. व्हेन दे emit the byte code, it will be optimized. Vectorized operation बहुत ऑप्टिमाइज आता है. use numpy, all vectorized calculations are optimized enough. Then if that is not enough, use numba, use SIMD, बहुत सारा नुम्बा चीज मैंने है. ट्राई करा था नुम्बा में, बट दिक्कत क्या होती है, जैसे नॉर्मल जो कोड होता है उसे उसमें कन्वर्ट करने नहीं में रन बहुत टाइम करता, लग हाँ जाता है. मुश्किल है. अगर वो जैसे नहीं भी है तो आप सिंपल नंपाई से आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा बॉस. नंपाई से, हाँ वो एरे फॉर्म में करके इंस्टेड ऑफ यस, एंड डायमेंशनल एरे ऑलवेज. मतलब वेक्टराइज ऑपरेशन है ना, सीक्वेंशियल ऑपरेशन नहीं. अभी क्या है कि आपका OHS से भी डेटा पे ही आपको 10 और कॉलम बनाना है. एक्सेल में भी उतना टाइम नहीं लगता है. तो सोचो जितना एक्सेल टाइम नहीं लगता आपको, नेटिव प्रोग्राम तो उसका कंपेयर कर ही नहीं सकते. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द सेपरेट कॉलम्स. आपको क्या होगा, 10 कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा 10 कंडीशन के लिए, ट्रू फॉल्स का. हाँ जी. और मोस्ट ऑफ द कंडीशन इफ दैट इज एंट्री ट्रू और फॉल्स होगा, वो तो और भी फास्ट होगा. दो कंपैरिजन करने में और भी फास्ट और एफिशिएंट रहेगा. ठीक है. Shabir, I am using the Kite extension. Tell me. Recently, I am getting invalid header. Actually, I don't modify any header. I am just using the existing code and doing something with it. Nothing special here. Even though the error message from Zerodha says that the header is invalid, could this be because of rate limit or some other reason? Hello. I think what I have seen, what Panet has sent, it was 401. So either the endpoint has changed or something like that, but I have to check it personally. I tried to check it, but I have not encountered, or I was not able to replicate the same error. But definitely I'll check it on Monday. On a certain endpoint, I think it is coming. LTP, I think there is an error of 401. I'll check that. It should not come. Okay. In fact, I am using the code before getting the after getting the LTP. I am using the code for option chain which you gave me. So till now I am trying to decipher it, but that is a separate funny part. But what happens is when I am getting option chain data regularly, then suddenly what happens is it becomes none. Everything becomes evaluates to nothing, and I try to sleep in the code.
and again try, but the none never goes. But if I restart the program, it is working. So In that, which options in you the have given me QTS? one. It is the dictionary comprehension program which you. Okay. I will check that. Yeah, just ping. I'll send the full code maybe, and or give me a reference what I've shared. Just I'll check what is happening. Because sometimes the servers behave if there are multitudes of requests. What they do, that session they invalidate. So no more data is coming. So when you're starting a fresh session, the data is coming. So that logic, what I'll do, I'll just do a session clearance. I will add the session clearance logic. So if there is for a particular 1-2 second, if there is none data, just clear the session, start afresh. So you need not start the program again. It will be done automatically for you. Okay, Shabir. Okay. Thanks a lot. Okay. Shabir, I have a question regarding your the clearing session. If we use AP scheduler, does that clear the session? So let's say if there is a session disconnect from the socket, I am getting some LTP from the socket data of option prices, and for some reason there is a session disconnect. So if I use AP scheduler to reconnect, does that work, right? The AP scheduler does not make the main thread goes down, so definitely it should reconnect. The main thing when the socket reconnect mechanism not work, because people use this on error or the on close function they pass, and they let the main thread die. So you have to keep the main thread intact. It should not die, because all this WebSocket is running on another thread. So if that thread dies and the main thread doesn't die, it doesn't matter, because you can initiate that thread from this main thread again and again. Okay. So I think with AP scheduler you will not be having any trouble, because that does not have its own main thread. It's a child thread. Okay. I have one more question. So the way I have actually designed an algorithm while taking a tick data is that we keep basically some amount of buffer zone. So let's say if I'm doing an algo test and I'm keeping a 40-point SL. So if my SL gets hit, then only I'm going to place an order, right? What we do is we actually keep a 5 points buffer. So let's say if the SL gets hit at 35 points, I'm going to place an order at 40. If my SL is. So what do you think, and how should I optimize for this comparing for the results with algo test or stock mark? What I understand from your statement, like you keep trigger and in system, and when the trigger is met, then you place order, right? Correct. So like you have kept it, taken a 5 point 5 point buffer. So imagine if I have kept so system mein whenever. Please go ahead. Then when your trigger encounters the signal generated, boss stop loss hit, place kar do order. Send a stop loss order to the broker. Correct. This is one way. Okay. Many times, if you listen to logical trader, I think the guy with black yes. So very famous guy, very famous guy. Yes. I've heard him. He's quite interesting actually. So he keep on saying that, boss, you can do it without using making any additional charges or margin requirement. What I understand that he's talking about GTTs. Please pardon. So what you can do? You can use GTT. Okay, GTT. Okay. If no GTT. In that case, what happens? You have offloaded this, monitoring and placing order to broker, infrastructure. Okay. And your code is doing nothing. There's no additional, hassle for your code. Kitna bhi volatile market hoga, the broker GTT will function way better than your own code, right? First thing, your code will be delayed, having delayed information. They are having information prior to you. Correct. Because they are receiving and they are passing to you. Correct. So effective way will that be? Like you offload this SL
be triggered as a GTT if you are using Zerodha. I don't know about others who is offering GTT or How not, about but I know I'm telling you. how about using stop loss limit orders? Would that work? I think, you know, in that case you can't place two. You know, the stop loss order, it will go directly to exchange. So if some if I say, if the myth is true or something like that, people do SL hunting or not, I'm not going to say that whether it's right or not. In that case, one thing you should know, that the order is with NSE. Abhi order book, when all the big boys are having complete order book. If I get a, you know, connection, a colo server or something of that, you know, I can see all the order book. I know your positioning. Kidhar SL order. So if I have to reap the benefit, and then that order can be filled within a flick. Week ban jata hai. But when the thing sits in broker infrastructure as a GTT, the order is not in exchange. Oh, got It's it. just behaving like how your code is behaving. But the major difference is, you are having an advantage of a bigger infrastructure, very big size of computer, system resources. They are having plenty of resources, right? Fast execution, and you know, on-time execution, because they are having information prior to you. Correct. They are having first-hand information. We are having second-hand information. So Correct. I think that way, I would prefer that way. Offloading my thing on broker infrastructure, let them do this. And there are, I believe there is no, you know, for GTT, I don't think they book, you know, margins Okay. upfront. But actually, I'm using IIFL's infrastructure, so IIFL does not have a GTT order set. But okay. So in that case, whatever you are doing, exactly follow that. But for this 5-point buffer, that you know, that should not be static. Rather, I'll say it should be dynamic, depending upon how in the last, you know, 60 or 90 seconds the spread has behaved between bid and ask. So be कौन aggressive है? If the ask side personals are aggressive, or the bid side personals are aggressive, so at least you'll get a sense of you know, market can you direction. please elaborate more on that? Can you please elaborate more on that? I would really like to अभी develop 90 हिंदी में बोलेगा 90 सेकंड आपने मॉनिटर किया, 90 सेकंड में देख रहे हो कि सेलर्स का जो भी प्राइस आ रहा है वो फिल हो जा रहा है. ठीक है. तो क्या है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, कोई भी प्राइस पे सेल कर देना है. So most likely chances of that I'll evaluate like अभी अगले नेक्स्ट चैनल में थोड़ा सा नीचे जाएगा मार्केट, मूव आएगा, बिकॉज सेलर्स एग्रेसिव हैं और बायर्स किसी भी प्राइस पे सेल कर रहे हैं. दे आर नॉट बॉदरिंग कि मार्केट का प्राइस क्या है, फेयर प्राइस क्या है. नॉर्मली व्हाट you know, the informed personals do, they don't put things on market order. They don't become aggressive until unless कोई bulk order मारना है तो they go fair price पे ही order मारते हैं. अभी if the seller side is aggressive, if the buyers, you know, all the top 5 top 10 bids are getting filled, whatever price they are quoting, तभी वो हो जाएगा कि bid size aggressive है. तो मार्केट का क्या है कि किसी भी रेट में बाई करो, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा. तो एग्रेसिवनेस आप थोड़ा चेक कर सकते हो. ओके. और उसके हिसाब से फिर एडजस्ट कैसे करेंगे? तो लेट्स से मैंने 40 मैं 200 रुपए पे एक ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ. अभी देन आप स्प्रेड तो नाप रहे हो ना, बिड आस्क का स्प्रेड क्या है. आप 90 सेकंड में कितना ये हुआ, पहले डिफरेंस लाइक ऑन द वेरी फर्स्ट सेकंड इट वाज 0.5 एंड later it elongated in between to like 0.5 से ये 3 और 4.5 हो गया डिफरेंस. करेक्ट है. Yeah, the midpoint of bid is ask, or the vertical midpoint. Horizontal midpoint is different and vertical midpoint is different. अभी वो midpoint में कैसा spread का difference है, that spread point से आपको एक evaluation हो जाएगा कि भाई जब next tick में आपका max कितना आ सकता है fluctuate. 5 सेकंड वेट करने से अच्छा है कि आपको पता है कि max कितना आ सकता है. आप क्या करो उसके midpoint पे, like अभी मालूम है कि आपको 5 रुपए का फ्लक्चुएशन आ सकता है, तो 2.5 पॉइंट का मतलब 2.5 पॉइंट का यू नो ट्रिगर और ऑर्डर प्लेस में, मतलब ऑर्डर प्राइस में डिफरेंस रखते हैं, ऑर्डर मार दो एसएल का. एसएल अच्छा. तो द वे आई एम करेंटली डूइंग इज कि मैं अगर 200 रुपए पे कोई ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ तो 240 का स्टॉप लॉस बनता है. ठीक है. तो मैं करंटली ऐसा कर रहा था कि 235 पे अगर प्राइस टच होती है तो मैं ऑर्डर पंच करता था मार्केट के अंदर में. पर आपका ऐसा कहना है कि बिड आस्क को अगर मॉनिटर करो, अभी बहुत 235 पे गया
तुम 235 पे ट्रिगर किया, अभी ब्रेक डाउन करते हैं, 240 पे तुम्हारा ये है, तुम मार दिया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा भाई, तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट क्या होगा अगर तुम नहीं भी डालता, 235 से 239 जाके वापस आ जाता, आप तो स्टॉप लॉस ले लिया। कई बार ऐसा होता है, अरे यार स्टॉप लॉस दे दिया, 239 से ही रिटर्न आ गया। करेक्ट है। तभी क्या है, एग्रेसिवनेस देखना है कि भाई अगर वो डायरेक्शन जा रहा है तो स्ट्रेंथ क्या है, क्या ये मोमेंटम सही है, जाएगा 90 सेकंड में। तो देख लिया मैं, 90 सेकंड से परसिस्टेंट है, मतलब एक साइड का ऑर्डर बुक खाली होते ही जा रहा है, मतलब एट एनी प्राइस एक साइड का ऑर्डर बुक खाली कर दे रहे हैं लोग। तो मतलब जिस साइड का ऑर्डर बुक खाली हो रहा है उस साइड के लोग ज्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं ना, मतलब दूसरे साइड वाले, उस डायरेक्शन में मार्केट मूव होने का चांस है। तब आपको क्या है कि मतलब यू हैव ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, मतलब आपका ये और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो जाएगा कि आपने स्टॉप लॉस लेके सही किया, रादर देन ऑन डिपेंड कि भाई वो करेक्ट नहीं था। स्ट्रेंथ था, 60 सेकंड स्ट्रेंथ था, बट द नेक्स्ट 30 सेकंड स्ट्रेंथ वाज वीकनिंग पर सेकंड, हर सेकंड वीकन होते ही जा रहा है। And you are monitoring, suppose you are making a graph and seeing its slope, up slope था, down slope हो गया इसका, then put in people's, I have seen people's, they put MA, ओ क्या ठीक है इसके ऊपर है नीचे करके, to get the get an idea about the strength of that movement। फेक आउट भी हो सकता है ना, आप ऐसे लेके चला गया रिवर्स्ड, ऐसा मतलब मेरा मतलब what I was trying to say, it's like a dynamic SL thingy। ठीक है, तो इससे तो फिर डायनामिकली भी ट्रेल हो सकता है ना आपका, मतलब आपका पॉइंट में थोड़ा सा आगे लेके हो सकता है। करेक्ट डायनामिकली ट्रेल हो सकता है, बट वही है कि अभी विच ब्रोकर यू आर हैविंग, लाइक अभी जोधा में तो मुश्किल है, डायनामिक करना से अच्छा भैया मत करो, बिकॉज आईडी वाइज ऑर्डर लिमिट, मैं अपने ही फंक्शन के अंदर में रखूंगा ना चीजें। तो अभी मैं कैसा करता हूँ, अभी मैं फिलहाल में सॉकेट का डेटा लेता हूँ और मैं टिक बाय टिक के बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है इसमें, कर सकते हो, मैं अपने फंक्शन के अंदर चीजें कैलकुलेट कर रहा हूँ। that if you are doing tick wise calculation, if this sort of tick calculation, then ट्रेलिंग आराम से हो सकता है, क्यों नहीं? हाँ, मैं ट्रेलिंग अपने किस फंक्शन में कर रहा हूँ, मैं उसमें ट्रेलिंग में डालता ही नहीं हूँ, पर वो ट्रेलिंग डायनामिक, मतलब आपका पॉइंट काफी अच्छा लगा मुझे कि ऑर्डर बुक पे ट्रेल कर लो, ऑर्डर बुक पे इस पे लेके आने से। हाँ अभी मिल रहा है ना डेटा यार, यू आर गेटिंग सम डेटा। भी जो डेटा पेड डेटा आप लेते हो, एनी अदर इफ यू आर गोइंग विद एनी अदर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, दे विल गिव यू L1 डेटा। अब ब्रोकर से ही L2 डेटा मिल रहा है। मान लो कि अभी ये बड़ा बड़ा जो वॉट एवर दिस सॉफ्टवेयर दे आर गिविंग, दे आस्क यू टू सब्सक्राइब टू सपोज ट्रू डेटा, so I think most probably they are giving L1 data only, one best bid best ask, not L2 data, what Correct. information I have। तो अभी L2 डेटा जब फ्री मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करना है ना भाई, then you are having access to in your IFL, you are having L3 data as well, so and almost all I think are having zero था। तो अभी क्या करो ना, if the account is dormant also, कुछ एक buy holding करके account active करके get the data from your broker also, try to aggregate, make your LOB more, like abhi what L2 and L3 snapshot I am having from IFL and what L3 snapshot I am having from Zerodha, if both is having different bid and ask, I am having, if all 20s are different, then I am having L40 snapshot of book। करेक्ट, 40 लेवल का मेरे को ऑर्डर बुक है भाई, then what I can do, समझो मेरी बात, then you have a 40, you can see how people have positioned themselves। Not everyone get the same data, right? अभी क्या है, 1000 एक सेकंड में, what I according to my analysis I told you ना, 20,000 lots per second जा रहा है आपको। तो when you get, have you seen volume doesn't come in, volume comes cumulative and you have to calculate one thing more you get in text, LTQ से volume तो नहीं आता ना, per second में volume 20,000 lot हो रहा है, but last traded quantity is 300, then three ticks you are getting 300 900 quantity while the volume is 20,000 lot। तो उधर बाकी डेटा तो आपका सही नहीं ना कि भाई ये you are having 9, tell me, you have interrupted, tell me। नहीं करेक्ट है, बिल्कुल सही बात बोल रहे। तो वो 3 टिक के बाद में मेरे को मतलब 300 की क्वांटिटी आ रही थी, लेकिन किसी और के पास में एकदम तो टोटल क्वांटिटी तो 20,000 थी, तो इसका मतलब पूरा प्रॉपर डेटा है नहीं। वो क्या है कि जिस टाइम पे जिस ब्रोकर को जा रहा है मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, सो इंटायरली एडवर्स भी हो सकता है। सपोज इफ आई गेट another 10
ऑर्डर बुक डेटा मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, 20 + 10 30 हो गया ना, कहाँ 5 लोग देख रहे हैं। और इफ आई हैव 3-4 ब्रोकर्स व्हिच आर हैविंग L3, सबको एग्रीगेट कर लो ना भाई। आई हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा अपना कंप्यूटर पे अच्छा कोड लिखना है, एग्रीगेट सेम टाइम पे करना है, आपकी मेहनत लग रही है, व्हाट योर एफर्ट्स, देन योर ओन क्लास इज हैविंग, forget vanilla class, you have your make your own class of your own ticket, take 4 source, then to all your strategies they will not get the data from broker sockets, your own local socket is passing the aggregated data with all these data. मतलब I made a tweet, समझ रहा हूँ। This is very nuanced actually, काफी अच्छी आइडिया दी आपने। Tailor it to your need। भाई अभी कपड़ा सिलाने जाते हैं तो we stitch to our own body ना, we don't, we सब जेनरिक तो नहीं हो सकता है, ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा। सही बात है। This makes way more sense। तो करंटली मैं क्या करता हूँ, ट्रेल करता हूँ, लेकिन एक फिक्स पॉइंट का ट्रेल होता है कि भाई लेट्स से 10 पॉइंट 15 पॉइंट का हमने कुछ एक ट्रेल देख लिया बैक टेस्ट के अंदर में, और फिर उस हिसाब से बस फिर हम लोग ट्रेल कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। सर मुझे एक दो सवाल और, नहीं सर बहुत अच्छा बताया आपने, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा बताया। तो दिस इज एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल एज वेल, क्योंकि मैंने देखा था कि पहले मैं डेटा ज़ेरोधा से लेता था मैं पहले, और बाद में IIFL पे शिफ्ट हुआ क्योंकि डेटा ज़ेरोधा को 2000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज भरो एंड ऑल, मतलब सॉकेट सेम ही होता होगा, बट व्हाट आई हैव एक्चुअली नोटिस्ड इज कि डेटा दोनों का अलग आता है। तो इवन इफ यू सी द कैंडल फॉर्मेशन, IIFL का कैंडल और ज़ेरोधा का कैंडल ही अलग है जो बन रहा है वहां पे। Even in IIFL you'll see difference in their web, XTS platform is getting different data, their web platform TT Web is getting different data, TT Web is getting different, Blaze में अलग आता है डेटा और TT Web में अलग आता है डेटा। then shift towards the discount broking, 5% का कुछ और ही चल रहा है, because they have taken I think 500 message pack line, तो उनका बीच में जो business customers थे, I think the Kedianomics guys, the Saurabh Kedias and all, they have requested to increase their bandwidth, तो उनका डेटा कुछ और ही है। तभी क्या है, अकाउंट खोलना है क्या है यार, फ्री में खुलता है, खोल लो, एग्रीगेट डेटा। मेरे पास आई थिंक शुरू में जब मैं खोला तो 10-15 अकाउंट खोल दिए थे, सब डॉर्मेंट पड़े हैं, बट लॉगिन आईडी सबको डेली लॉगिन करता हूँ प्रोग्रामेटिकली, आई एम कीपिंग इट एक्टिव, जस्ट एग्रीगेट द डेटा। नहीं, दिस मेक्स एक्चुअली वे मोर सेंस, क्योंकि एक तो ऑर्डर बुक थोड़ा ज्यादा न्यूएंस हो जाएगा, और फिर उस पर ऑर्डर बुक के वहां पे अपन ऑर्डर भी मार सकते हैं वो हिसाब से, ताकि ऑर्डर मैचिंग की भी फिर गारंटी मिलती है, तो ज्यादा बफर नहीं रखना पड़ता। हाँ वही पोजिशनिंग मालूम तो करना है ना। सपोज लाइक इन द यू हैव made yourself a limit order book of like 30 suppose, and the last 30 ask, the top ask, you are seeing a huge quantity of 25,000 quantities there in future, Bank Nifty future, and order size is something, then आपको एक बात तो मालूम है कि भाई boss, this is going to be a super resistance, because limit order is there of this much quantity, so at least you get somewhat idea, not 100% accurate, at least somewhat idea of support and the major selling points कहाँ से आ सकता है। अभी limit is there 25,000, whenever somebody will go and reach that point, automatically some quantity will fill, like मेरा ही चला गया 500 quantity, तो out of that 25,500 quantity will be filled, तो वहां पे कभी भी जाएगा तो रेड कैंडल बनेगा, वीक बना के नीचे आएगा, until unless that is cleared out। तो पोजिशनिंग ऑफ मार्केट, लाइक किधर पोजीशन क्या है, किधर लोअर हाई बनेगा, किधर लोअर लो बनेगा, एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मैं ये रामबाण नहीं है, दिस इज नॉट होली ग्रेल। नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। मैं एक्चुअली मैं उसी सवाल पे आने वाला था अभी। डॉक्टर सर, हाँ बोलिए। हाय। हाँ सर, ये जो अभी आपने बताया ना कि जैसे वहाँ पे 40,000 ऑर्डर पड़े हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर सेलिंग के ऑर्डर है तो वहां से एक बार मार्केट थोड़ा बहुत अटकेगा जरूर। तो सर मैंने ट्राई किया रियल में। ओके, जैसे मतलब अभी क्या है कि अगर वो रियल ऑर्डर है तो ठीक है, समटाइम्स स्पूफ ऑर्डर्स भी रहते हैं भाई। नहीं सर, आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि वो ऑर्डर वहां पे कितनी देर से टिके हुए हैं। अगर वो इमीडिएट ऑर्डर आ रहे हैं, इमीडिएट जा रहे हैं, तो मे भी फ्रीक ट्रेड वगैरह के हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑर्डर मतलब जैसे पिछले 20-30 मिनट से टिके हुए, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म तक भी रहे। दैट्स व्हाट आई सेड ना, अभी क्या भी कंपैरिजन करने के लिए, देन आई टेक लाइक लास्ट 90 सेकंड में क्या था। राइट मतलब आपके हिसाब से लास्ट 45 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, हैव अ कंपैरिजन। अभी इट्स वेरी बिग रैबिट होल, जितना डिग करोगे उतना ही, द मोर डेटा यू हैव, द मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन यू कैन मेक। अभी नुआंस क्या है, द मोर टाइम यू विल स्पेंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स,
live experience, then only you'll get to know, then you'll get an idea, then you will sketch it, then you will test it. तो उसके लिए क्या है, अभी डेली डेटा को एटलीस्ट स्टोर करो, सेव करो, देखो. सर एक आपके रशियन ग्रुप है, वो तुम्हारा मतलब जैसे क्रिप्टो में मैनिपुलेशन का काम करता है, उनका कंप्लीट मतलब हेज फंड है, तो वो इसी मतलब जो आपने भी जो बताया ना, इसी तरीके के ऊपर वो काम करते हैं कंप्लीट. मतलब उनके पास जैसे मतलब जितने भी एक्सचेंज है जिन पे वो काम करते हैं, उनका कंप्लीट ऑर्डर बुक होती है, तो वो ट्रैक करते हैं कि जो लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं वो कितनी देर से पड़े हुए हैं, उनमें क्या वो तो है ही है मूवमेंट ना. when you are HFT, when you are going for co-location or anyone, like मैं ही पे करके ले लिया तो I'll get the complete order book. अभी आपने क्या मॉडिफाई किया, क्या क्या एवरीथिंग, the complete book ही है यार. when you are having a complete book snapshot, nothing else you need ना. अभी उसी पे सब कर लो. but उतना डेटा, like suppose I'm dreaming to start an startup, वो उतना डेटा लेने के लिए NSE को करीब 80 से 1 करोड़ देना है पर ईयर. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हेवी चाहिए बॉस, यू कांट प्रोसेस दिस मच, एंड उतना है सर. डेटा बट है. एसएल ऑर्डर्स तो नहीं दिखते हैं, राइट? एसएल ऑर्डर्स ऑर्डर बुक में भी क्यों? और यू गेट एन ऑर्डर आईडी, राइट? व्हेन यू गेट एन ऑर्डर आईडी, दैट ऑर्डर इज देयर इन द ऑर्डर बुक. बट आपको ये नहीं पता चलेगा ना वो एसएल ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, लाइक वहां पे सेलिंग. एसएल ऑर्डर नहीं, मेरे को तो ये पता चल गया ना कि उधर एक ऑर्डर है, दो ही साइड होगा, बीड आस्क, उधर ही पोजीशन होगा, कभी भी एसएल और ये सब कैटेगराइज नहीं होगा. अभी मुझे ये तो मालूम चल गया ना भाई कि आस्क में मान लो कि व्हाट आई सेड 25,000 क्वांटिटी का एक ऑर्डर वहां पे, मे बी दैट इज ऑल एन क्यूमुलेटिव एसएल ऑर्डर ऑफ 920 स्टैडलर्स. करेक्ट है? I am a big boy. I want a best fill. मेरे को all of a sudden पैसा कमाना है. What I'll do, a mass, I have the capacity to put a bulk order. I'll put matching the bulk the quantity of 25,000 रिवर्स पोजीशन में डाल देगा, आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा, पूरा सारे लोग का स्क्वायर ऑफ हो जाएगा एक साथ. करेक्ट है? बिल्कुल सही बात है. करेक्ट. तो वैसा ही हुआ ना ऐसे. राइट. दिस इज द लॉजिक. ये वॉल्यूम प्रोफाइल एंड मार्केट प्रोफाइल्स में भी दिखाता है, तो ये चीज और इसमें अलग है क्या? मतलब मुझे इसका आइडिया नहीं, बट जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल only you can get with only they create only with best bid and best ask. Only L1 data is required, not even 5 level required. तो अभी क्या है, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि फ्रॉम प्रीवियस टिक to this tick क्या हुआ, what was the last traded quantity and volume increase, and where the price has increased or decreased, accordingly the color profile. सर ये ऑर्डर फ्लो में वही दिखता है? Exactly, मैं नहीं बोल सकता because I'm not following all this indicator of order flow. Reality, झूठ बोल के क्या फायदा भाई, फेंकना नहीं है ना इधर आके, तो मैं वो नहीं देखा हूँ. तो देखता हूँ प्रोफाइल वगैरह, जहाँ तक what I understand, जब when I wanted to गो चार्टिंग पे जो मार्केट प्रोफाइल के साथ ऑर्डर फ्लो आता है. करेक्ट भाई, वो जो दोनों साइड आपको क्वांटिटी दिखता है ग्रीन कलर अगेन, दैट्स व्हाट आई थिंक. जो कहते हैं. So how they calculate it? First thing, how they calculate the difference between two ticks, the volume, and where the market has went. अभी क्या है, इस टिक से उस टिक में the volume has changed this much, but the price went down. तो क्या हो गया, सेल किया लोगों ने. Assumption है वो. You have not got the real data from L1. आपको L1 से थोड़ी पता चलेगा कि exactly सेल हुआ है. आप तो ये क्या कि मार्केट नीचे आया था and this much volume happened in between these two ticks. Accordingly, they have plotted it. It's an approximate assumption, not the accurate thing. कैसे हम लोग assumption बनाते हैं कि मार्केट नीचे आया, OI ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, OI नीचे जा रहा है तो शॉर्ट कवरिंग है. क्या है केस, we don't know, but this is approximate assumption, not the real case. मैं कहता हूँ भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो होली ग्रिल है या होली बुक है या नहीं, what is my understanding, I'm just telling you inside out, raw format में, there is no मसाला भाई. सभी सर, मेरा एक सवाल था इसमें, does order flow also follow momentum? जैसे मतलब ऑर्डर फ्लो का अगर एक प्राइस डेटा बनता है तो does that also follow momentum? ऑर्डर फ्लो का क्या बनता है?
एक मोमेंटम फॉलो करता है क्या? जैसे कोई भी टाइम सीरीज का डेटा होता है वो एक मोमेंटम फॉलो करता है इन एनी जनरल केस। जैसे प्राइस बेसिकली फॉलोज मोमेंटम, या प्राइस से बेसिकली अगर मोमेंटम में आ गई तो प्राइस मोमेंटम कंटिन्यू रखती है अपनी। तो ऑर्डर फ्लो से अगर ट्रैक करे तो ऑर्डर फ्लो भी मोमेंटम मेंटेन करता है क्या? मतलब लेट्स से ऑल द ऑर्डर्स आर गेटिंग फिल्ड। वही तो बात कुछ देर पहले बात की ना, एग्रेसिवनेस ऑफ वन साइडेड, किस साइड का एग्रेसिव है लोग उस साइड, अगर वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ देन प्राइस विल इंक्रीज फर्दर। अभी लाइक एक साइड की ऑर्डर बुक खाली होती ही जा रही है, इट्स नॉट स्टॉपिंग, इवन द एक्सेलरेशन इज नॉट ड्रॉपिंग। जैसे कोई भी ऑर्डर आ रहा है फिल होते जा रहा है, देन द ट्रेंड विल कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन। लाइक्लीहुड ज्यादा है, द लाइक्लीहुड। एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि नो नो नो, ग्रेजुअली इन द लास्ट 30 सेकंड नॉट एवरीथिंग इज बीइंग फिल्ड। ऊपर के 3 ही आस्क फिल हो रहे हैं, नीचे फिर अभी कभी कभी क्या होता है कि पूरी 20 की 20 आस्क फिल हो जा रही थी, देन एग्रेसिवनेस था। अभी क्या धीरे धीरे ग्रेजुअली इट केम कि वन ओनली हो रहा है, ओनली बेस्ट आस्क इज बीइंग फिल्ड। तो अभी क्या है, मतलब भाई मार्केट का मोमेंटम खत्म हो गया, इट्स गोइंग टू गो साइडवेज, क्योंकि किसी भी साइड का ज्यादा क्वांटिटी फिल नहीं हो रहा है, ज्यादा लेवल फिल नहीं हो रहा है। करेक्ट ना? 5 के 5 अलग, अभी आपके पास L2 बुक है, 5 पे 5 बेस्ट टास्क फिल हो रहे हैं या बेस्ट बिट फिल हो रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में मार्केट है, राइट? अभी वो 5 में से एक ही फिल हो रहा है या 2 फिल हो रहा है, या तो हो ही नहीं रहा है, 1 सेकंड से वैसा ही है। करेक्ट। तो वही है ना अभी, और यही इसको पहले ऑर्डर फ्लो मोमेंटम सबसाइड हो गया तो मार्केट साइड सबसाइड हो गया ना। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल था। टू द बेस्ट ऑफ माय बिलीफ इज कि प्राइसेस जो होती है, लेट्स से इफ आई वांट टू ट्रैक अ पुट ऑप्शन प्राइस, इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन वेयर द बैंक निफ्टी इज गोइंग। करेक्ट है? मतलब उसका खुद का ऑर्डर फ्लो तो है ही है, बट ऑल्सो इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन वेयर द बैंक निफ्टी इज गोइंग। करेक्ट? मतलब मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। डेरिवेटिव प्राइस का तो बहुत सारा है यार, तो डिफरेंट बॉल। मुझे ऐसा पूछना था कि बैंक निफ्टी का स्पॉट का तो ऑर्डर फ्लो मिलेगा ही नहीं, जो ऑर्डर फ्लो मिलेगा वो तो फ्यूचर्स का ही मिलेगा। तो उसके बेसिस पे कुछ ट्रैकिंग बना सकते हैं क्या कि हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कहाँ जाने वाला है बेस्ड ऑन सम ऑर्डर फ्लो, और वो हिसाब से फिर मैं पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन में कुछ एक मैं ट्रेड ले सकता हूँ करके? ऐसा कुछ आपने कभी सोचा है, आपने कुछ बनाया है तो प्लीज हमें थोड़ा एनलाइटन कीजिए ना। नो भाई देखो, इस ऑप्शन की प्राइसिंग अलग ही बॉल गेम है, उसको सिर्फ स्पॉट के या फ्यूचर के मूवमेंट से नहीं कर सकते आप। तो पहले तो फर्स्ट हाउ इट हैज बीन प्राइस्ड इन एट द वेरी इनिशिएटिव, मतलब ज्यादा प्राइसिंग हो गया, हाउ इट हैज बीन प्राइस्ड, मतलब ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है कि नहीं है। अभी क्या है कि इन्फ्लेटेड रहेगा तो मार्केट कितना ही मूव करेगा वो डिफ्लेट ही होना है, बाद में घटेगा, एंड IB इज गेटिंग सबसाइडेड। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट बॉल गेम है। अभी इसके बारे में एग्जैक्टली यहाँ पे बात नहीं कर सकता, बहुत प्रो लोग हैं इसमें। वो ऑप्शन की प्राइसिंग अलग ही गेम है, ऐसे सिंपली इसको ऑर्डर फ्लो से नहीं कर सकता, 100% बोल रहा हूँ। 50% टाइप तो सिंथेटिक फ्यूचर पे चलता है। अब वो एक्चुअली तो क्या है ना, हम लोग रिवर्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इनएस इज नॉट गिविंग दिस IB डेटा, सिंथेटिक फ्यूचर के डेटा पे कंसीडरिंग कॉस्ट ऑफ कैरी एंड व्हाटएवर डिस्काउंट सब मिला करके हम लोग रिवर्स कैलकुलेट करके वो देख रहे हैं। बट वही तो बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट फ्यूचर से नहीं देख सकते इवन इफ इट इज मंथली एक्सपायरी। ओके 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 ओके, मतलब उसमें और भी इनपुट्स की जरूरत है, सिर्फ अलोन दैट फ्यूचर डोंट वर्क, आई डोंट थिंक सो। हाँ मतलब अगर हमने एक ऑप्शंस का गामा वगैरह या फिर ऑप्शंस का वेगा थीटा भी ले लिया, कैलकुलेट कर लिया, एंड स्टिल अपन, मेरे को ये समझना था कि अगर मैं फ्यूचर्स के ऑर्डर फ्लो पे फ्यूचर्स की प्राइस का डायरेक्शन पता कर लो तो कैन दिस गिव मी सम काइंड ऑफ सेंस फॉर ऑप्शन की प्राइस का डायरेक्शन? मतलब प्राइसिंग एग्जैक्टली नहीं फिगर आउट करना है, बट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इस But that future direction can be influenced by the order flow in the options. Think about अच्छा, ऐसा भी होता है, रिवर्स भी होता है? नहीं, मेरा तो एक ऑब्जर्वेशन है कि उल्टा ही है, ऑप्शन ड्राइव्स करता है फ्यूचर को। बिल्कुल सही, मैं वही बोल रहा हूँ ना, when the order flows of options भी को आप वही बोल रहा हूँ, it's different ball game boss. Not only in this index. अभी क्या है कि इन स्टॉक ऑप्शंस आल्सो इधर क्या पोजीशन किया क्या है उसके हिसाब से स्टॉक का मूवमेंट पे ही प्रेशर पड़ता है, नॉट ओनली कि भाई आप इक्विटी कितना बाई कर दिया क्या नहीं, स्क्वीजेस एंड ऑल। तो
क्या होता है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं दे हेज देमसेल्व्स विथ इक्विटी, डेल्टा हेज करते हैं। तो आपने खरीदा और उसने सेला, तो उस जो मार्केट मेकर ने सेल किया आपको, उसके अगेंस्ट वो तो डेल्टा हेज करेगा, बिकॉज ही इज अर्निंग फ्रॉम द मेकिंग फीस, मेकिंग फीस। उसको ट्रेडिंग से पैसा नहीं आ रहा है, कितना उसने टर्नओवर जनरेट किया उसके हिसाब से वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग उसको प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम द एक्सचेंज। ही उसको ये रिस्क नहीं चाहिए। इफ ही हैज सोल्ड, वो अपने आप को हमेशा डेल्टा हेज करेगा। तो सपोज यू हैव सोल्ड, you have bought put and he has sold put to you, then he will hedge himself either with the equity of that underlying or with the future. तो इस हिसाब से भी इससे समझ गया ना, तो वो तो डेल्टा हेज हो गया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट कहीं भी जाए उसको लॉस नहीं होगा, उसको प्रॉफिट तो मिल रहा है ये टर्नओवर से कितना बनाया। तो यही बोल रहा हूँ, तो अगर वो रिस्क आएगा देन दे व्हाट दे डू, द मार्केट मेकर्स दे adjust their position. In that adjustment, market moves wildly. If they adjust, their position comes into risk, either वो mass squad off करके position they change in accordance to that, वो future में आपको movement दिखेगा या equity movement दिखेगा। But that force, the driving force is to adjust from the orders of this, the order flow of options. ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है बॉस, इतना आसान नहीं है इतना। तभी तो ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, ऑप्शंस एक अलग ही दुनिया है। सही बात है, सही बात है। हेलो, हाय। हाँ सर, मेरे को एक कुछ और पूछना था, मतलब थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक भी हो सकता है। जैसे अभी आपने एक मिनट बस, मंजेश। हाँ सर बोलो। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ठीक है बच्चों। और जी बताइए क्या सवाल है, हम लोगों को सवाल सुने। ओके, मेरा सवाल ये है कि जैसे मतलब AWS का, जैसे मैं अभी अगर फ्री टायर यूज कर रहा हूँ तो उसमें मतलब वो अलग अलग रिसोर्सेज देता है। जैसे मतलब कुछ AWS लेमडा के फंक्शन देता है, कुछ जैसे मतलब थोड़े थोड़े देता है सब कुछ। मतलब लेमडा को किस तरीके से काम में ले सकते हैं अपन करंटली, कोई मतलब? चलिए, मैं तो डिजिटल ओशियन यूज कर रहा हूँ, वो चार्ज देता नहीं, सबसे सस्ता मुझे डिजिटल ओशियन लगता है। इसमें क्या क्या AWS में लैम्बडा वगैरह है मुझे आइडिया नहीं कोई, और यूज कर रहा हूँ AWS, और उसके बारे में पता हो तो इनको हेल्प कर दो। मतलब लैम्बडा में ये होता है कि तुम्हें जस्ट मतलब वहां पे एक फंक्शन लिखना होता है और उस फंक्शन को जस्ट ट्रिगर करना होता है। वो क्या पीसी ऑन ऑफ करने के लिए लैम्बडा रहता है, और भी कुछ उससे होता है उस फंक्शन से? नहीं, कुछ भी तुम कंप्यूट कर सकते हो वहां पे। मतलब वो कंप्लीट मतलब AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। जस्ट वी हैव टू कॉल द फंक्शन एंड AWS ऑटोमेटिकली विल डू ऑल दीस थिंग्स। हमें मतलब फंक्शन कॉल करना है और उसके आर्गुमेंट पास करने हैं। ओके तो क्या क्या कैसा फंक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन देता है या क्या देता है वो? कुछ भी। हाँ, जितने सेकंड आपका फंक्शन चलेगा आपको जस्ट उतना ही चार्ज करेगा AWS, उसके अलावा कुछ चार्ज नहीं करेगा। ओके। तो मेरा आइडिया ये था कि जैसे मेरे को मतलब AWS लैम्बडा का कंप्लीट नॉलेज नहीं, डॉक्टर साहब को क्या पता नॉलेज हो। तो मेरा मतलब मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा था वो ये आ रहा था कि अगर जैसे अपन कॉपी ट्रेडिंग की स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो जैसे मतलब वहां पे 1 मिलियन रिक्वेस्ट अपन लैम्बडा को डाल सकते हैं। मतलब कुछ फ्री है 1 मिलियन रिक्वेस्ट, कुछ ऐसे करके, मतलब उनके अलग टर्म है, मेरे को पता नहीं कंप्लीट। तो अपन ये कर सकते हैं कि जैसे मल्टी थ्रेड में या फिर मल्टी प्रोसेसिंग में जाएंगे तो अपन अपने ही पीसी का रिसोर्सेज काम में ले रहे हैं, राइट? तो क्यों ना हम उस चीज को AWS लैम्बडा के थ्रू कॉल करें कि अपन मतलब उसको पास कर देंगे यार, मतलब ये ऑर्डर है, इस स्क्रिप्ट में ऑर्डर लगाना है, इतनी क्वांटिटी है, और जस्ट मतलब ये तू फंक्शन को रन कर दे तो वो AWS रन कर देगा अपने AWS लैम्बडा से। अरे मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा तुम AWS का लैम्बडा वगैरह यूज करो, क्योंकि उसके लिए क्या है कि तुम्हें एक कोड को AWS के करस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा, और कभी मान लो उस कोड को किसी दूसरे सर्वर पर रन करना हो तो उसके फिर वो सारे चेंज करने पड़ेंगे, या अपना लोकल पीसी रन करना हो सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं तो अगर रहूंगा तो इंडिपेंडेंट ही लिखूंगा, AWS का जो भी एडिशनल फीचर है वो सबको यूज नहीं करूंगा। नहीं तो कल के दिन किसी और पर माइग्रेट होना पड़े तो फिर नया कोडिंग करो उसके लिए। AWS is not for multi-threading and multi-processing, boss. Only one process. सर आगे। So don't go there.
until unless you are doing some positional thingy which can be invoked at a certain time period, you can get away with one request and one response only with Lambda. That's it. Per call one request. सर फिर से बताओ, मैं मतलब समझा नहीं। एक लैम्डा फंक्शन में एक रिक्वेस्ट है, एक रिस्पांस, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और अपन वो मतलब अपने पाइथन से भी कॉल कर सकते हैं मतलब? हाँ, कर सकते हैं। अभी वो मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह नहीं चलेगा ना, मल्टी थ्रेडिंग चलेगा, कुछ नहीं, या फिर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट रिस्पांस नहीं चलेगा। वन रिक्वेस्ट एंड वन रिस्पांस इन AWS लैम्डा। मतलब अगर एक बार मैंने रिक्वेस्ट कर दी तो एक बार रिस्पांस आने के बाद में मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ? हाँ। ओके, लेकिन सर उनके सर्वर पे तो ये लिखा होता है कि आप मतलब कितनी भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। प्रैक्टिकली ट्राई करके देखो, एक पाइथन का फंक्शन लिख करके। नहीं सर, मेरे को तो पता है अभी चला है कि मतलब उसको पाइथन से B1 ट्रिगर कर सकते हैं। मेरे को तो लगा था कि मतलब अपने को उनको अलग से फंक्शन लिख के देना। दैट इज नथिंग बट यार, एक सर्वरलेस फंक्शन है। दे आर जस्ट मतलब दे हैव रनिंग इंस्टेंसेस, लाइक उनके, एक हिंदी में बोलता हूँ, 1000 कंप्यूटर चल रहे हैं, सब आइडल है। हर वक्त फुल 100% पे नहीं चलता ना, तो क्या होता है कि सारा रिसोर्स आइडली बैठा रहता है। तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा कोड ले लेते हैं और हर पे मतलब जैसे तुम रिक्वेस्ट करते हो वो क्या करते हैं, सारे सिस्टम में तो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, बस वो तुम्हारा पाइथन फाइल रन कर देता है, दैट्स इट। और आपको एक सर्टेन इन पॉइंट वेब में दिया जाता है, उसका आउटपुट वहां पे पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में यही है, सर्वरलेस फंक्शन। मतलब आप कोई सर्वर खरीद नहीं रहे हो, उनका किसी भी सर्वर पे XY से जो सर्वर खाली है वहां पे जाएगा, वो पाइथन फाइल रन हो जाएगी और आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। इसीलिए इसको बहुत रिसोर्स लिमिटेड, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम दे दिए हैं, 3 मिलियन 1 मिलियन व्हाटएवर, तो क्या होगा, बहुत लोग इसका मिसयूज कर देंगे, इसलिए लिमिटेशन है। भाई फ्री में तो इतना ही देंगे ना, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। राइट। तो $0 में इतना ही मिलेगा, और कुछ नहीं है। यही सर्वरलेस फंक्शन है, और कुछ नहीं। मींस अगर मैंने एक बार में एक ही रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, ये फ्री वाले में या फिर पेड वाले में भी ये सिस्टम है? सेम फंक्शन तो एक ही रहेगा ना, AWS लैम्डा सेम ही रहेगा ना। देखो हर चीज का मतलब नॉट एवरीथिंग, मतलब ये वन साइज फिट ऑल वाली बात नहीं है। दिस इज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि मान लो AWS लैम्डा ले लिया है, ये लैम्डा से मैं क्या करता हूँ, टोकन्स या इन टोकन्स अपना रिसीव करता हूँ जब चाहिए तो मान लो कि उसमें मैंने क्या किया, ज़ेरोदा का लॉगिन फंक्शन लिख दिया। तो कभी भी मुझे ज़ेरोदा का लॉगिन चाहिए तो ये पाइथन फाइल या ये इन पॉइंट को कॉल करूंगा, वो मुझे इंक टोकन दे देगा। तो मैं अपने प्रोग्राम में क्या करूंगा, बस खाली रिक्वेस्ट डॉट गेट दैट इन पॉइंट, आपको इंक टोकन हाथ में लेटेस्ट, करेक्ट ना? राइट। ये इस टाइप के पर्पस के लिए ये सही है। हाँ सर, मैं भी वो बोल रहा था, जैसे मतलब अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके पास वो चाइल्ड अकाउंट वाला, मेन अकाउंट वाला लेके आया था ना इश्यू, तो मैं उसमें ये सोच रहा था कि जैसे अगर तुम्हारे मेन अकाउंट में अगर ऑर्डर आ गया, अपन अगर वो ऑर्डर चाइल्ड अकाउंट में रेप्लिकेट करने, तो उसमें अपन अगर उसको लैम्डा फंक्शन को कॉल कर दे तो कर सकते हैं। एक बार तुम ये सिर्फ एक बोल दो ना, सिंपल ट्राई करके देखो। आई थिंक शाबाई हैज रेज्ड हिज हैंड, इनको बोलने दिया जाए। मंजिश, शाबाश। Yes. Okay. But I will ask the question in English. I joined here 1 minute ago. I have a powerful trading strategy, but I don't know how I can use Python. If someone can help me, yes, he can DM me, then we can proceed. Manjesh, I think you can take this up. Or Nandu can help, because Nandu has done too many projects on the crypto. So Nandu, you can just Nandu will help you, sir, on the crypto. DM me. Just be in contact with him. No? Okay, anyone else having? My username is Shiromani Darbar on Telegram. Sanju, Nandu, I will send him his user ID to DM you. You can message. Okay. Any other questions, sir? About to close in 5-10 minutes. We close. Okay. Anything else? From anyone of hearing, many our listeners, they are all listening to JV बकवास है, सब सुन लिया करके। नहीं बकवास नहीं। नहीं सर, आपके तो सब में बात करके बहुत अच्छा लगा।
मतलब सीरियसली बहुत नॉलेज एनहेंस हुआ है जो हमारा। मैं काफी समय से सुन रहा था, आपने जब वो वेक्टराइजेशन का बताया कि पैंडास को वेक्टराइज कर दो या फिर नुम्बा यूज कर लो, आपका कोड एक अराउंड 100 टाइम्स या इवन 2500 टाइम्स तक का फास्टर हो जाएगा ना। दैट वाज एक्चुअली एन आई ओपनर फॉर मी। मैंने खुद से गूगल किया, मतलब कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इट एक्चुअली। नो सी एवरीथिंग इज इन योर रीच। बस अभी क्या है, somebody will throw some light or somebody enlighten the path, obviously you can achieve your objective easily. I try to do that as much as I can from whatever social media platform, be it Telegram, Twitter. I try to do that. बैक टेस्टिंग के लिए एक वेक्टर बोट करके आप उसका भी कंसेप्ट चेक कर सकते हो, वो भी सेम वेक्टराइजेशन पे ही काम करता है। करेक्ट है जी, मैं वेक्टर बीटी एक्चुअली, वेक्टर बीटी। हाँ वही। अभी बताऊं, I don't use myself practically vanilla या generic things. अगर वेक्टर बेटी मुझे ही पर्सनली यूज करना रहेगा तो I'll just take it, see their source code, जितना चाहिए उतना निकाल के I will develop on top of that. Just generically, one library cannot tackle all the markets. I don't think so. Personal opinion है, बाकी आप देख सकते हो। सर एक रिक्वेस्ट था आपसे, आपको एक छोटा सा बैक टेस्टिंग का कोई स्निपेट शेयर कर पाएंगे आपके इसके ऊपर में, जब भी आपको कभी वक्त मिले तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। एक छोटा सा अगर आप कोई स्निपेट यूज करते तो, ताकि फिर हम लोग भी उस तरीके का कुछ अगर बना सकेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट दिस आई विल शेयर वन पाइथन स्निपेट इसी पे बैक टेस्टिंग पे। हाँ प्लीज उससे काफी हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप काफी सारी चीजें शेयर करते रहते हैं, मैं काफी आपका देखते रहता हूँ प्रोफाइल। I'll share that, okay, but I'll use polars, so I'll use combination of NumPy, pandas and polars. I'll try to make it as fast as I can. pandas में कर पाए तो सर काफी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब कुछ सीखा था तो pandas ही सीखा था, तो pandas ही काफी अच्छा आता है। If I use polars also, I'll make an interface for pandas as well. So anything. Sure sir, definitely. क्योंकि अगर एक छोटा सा अगर डेटा अपन ने कैंडलस्टिक का डेटा ले लिया और अगर ऐसा समझो कि छोटा सा सिंपल RSI का स्ट्रेटजी या मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी से बैक टेस्ट करके देख लिया, that would be very much helpful. No, when I will give that code, I'll give a sample data of 10 years, 1 minute data, to just demonstrate the speed. That would be very much helpful sir. वो ना डेटा कैसे लाना ना वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है एक्चुअली, तो somewhere along the way मुझे ऑप्शंस बैक टेस्ट नहीं करते जम रहे, so I'm just relying on these platforms only. हेलो, हाय, जैन सर। जैन सर बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहिए, मतलब पाइथन और ट्रेडिंग का क्या कॉम्बिनेशन है, ये मेरे समझ में नहीं आया। मैं ट्रेडिंग तो मैं भी कर रहा हूँ, क्या बताओगे आप थोड़ा? आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, तो जो आप वेबसाइट पर कर रहे हैं ना, बस इस काम को ऑटोमेट करने के लिए हम लोग पाइथन यूज करते हैं। सपोज कि आप कहाँ ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू कर रहे हैं या डायरेक्ट ब्रोकर पे कर रहे हैं आप? नहीं, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू। ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू पे आप कुछ इंडिकेटर भी लगाते होंगे या चार्ट्स वगैरह देखते होंगे। हाँ, तो वहाँ पे जो भी आप इंडिकेटर या चार्ट लगाते हैं, चार्ट का ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो जो कैलकुलेशन वहाँ पे आपने कर रहे हैं कि रेंज ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड लेंगे, चाहे ये इंडिकेटर क्रॉसओवर हुआ, तो वो सारा चीज हम लोग पाइथन में कोड करते हैं। मतलब ओपन हाई लो क्लोज से सारा वैल्यू निकल गया, तो हमारा जो कोड रहता है, जो पाइथन रहता है, वो उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहता है कि ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ। तो आप सिस्टम पे सामने बैठ के आप खुद अपना एक्शन ले रहे हैं, वो पाइथन सब कुछ आपको ऑटोमेट कर देता है। अच्छा सर, तो सीखना कैसे पड़ेगा इसको? नहीं, पाइथन तो काफी सिंपल है, आपको यूट्यूब देखने पे कुछ बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, और मतलब ये इसमें दूसरा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन बस पाइथन से आप ये अचीव कर सकते हैं कि आप जो मैनुअल काम करें सारा ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर फर्दर ये स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 में वो फर्दर इसमें कुछ एनालिसिस कर सकता है। बस पुराना डाटा आप आ गया आपके पास, आप उसमें सारा कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं सर, जो आप मैनुअली नहीं कर पाइएगा। अच्छा सर, मतलब जो भी हम वैसे काम, जैसे मैं लॉस मतलब वो लगा रहा हूँ, टारगेट वगैरह लगा रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा तरीके से? वो सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जैसे आप मैनुअल कर रहे हैं, आप एट ए टाइम एक स्क्रिप्ट देख सकते हैं, 2 स्क्रिप्ट देख सकते हैं, लेकिन पाइथन क्या करेगा, पैरेलली बहुत सारे स्क्रिप्ट को देख सकता है। आप मैनुअल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको क्लिक करने में और एग्जीक्यूट होने पे, एक्शन लेने पे आपको 2 सेकंड 3 सेकंड लग गया, लेकिन पाइथन विदिन नैनो सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आपको इमोशंस वगैरह आएंगे, तो ये सब चीज जो आएगा सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग जब हो जाएगी, तो सारे इमोशंस आपको खत्म हो जाएगा। जो भी आपका स्टॉप लॉस आया, टारगेट आ गया, तो ये सब आपके
प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो जाएंगे। तो इस सर तरह से आप कराते हो, कोर्स वगैरह करा रहे हो, आप क्या कराते हो? नहीं आप सर, हम लोग कोई कोर्स नहीं कराते सर। फिर आप ऐसा करो ना, आप पाइथन ट्रेडिंग का एक टेलीग्राम ग्रुप है, सबके लिए ओपन है। उसमें हमारे पाइथन ट्रेड मतलब मंजेश भाई ने एक्सेल में पाइथन के साथ इंटीग्रेट करके और आपके लिए आसानी हो तो एक्सेल का फ्रंट एंड बना दिया है, जहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको एक्सेल का ट्रेड करने ले बट पीछे में सारा काम पाइथन से हो रहा है। तो आप क्या करो, एक बार उसको यूज करो तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये पाइथन चीज क्या है, क्या कैसे मुझे मदद करेगा ट्रेडिंग में, कैसे मुझे हेल्प करेगा। मैं डिस्कशनरी करता हूँ तो ये पाइथन क्या चीज है जो मुझे क्या कुछ नया कुछ मैजिक कर देगा क्या। तो उसका एक फील लेने के लिए आप इसका जो प्रोग्राम फ्री में ये इन्होंने पोस्ट किया है, आप वो इंस्टॉल कर लो, इनका वीडियो देख लो कैसे करना है। और उस ग्रुप में कोई भी आई थिंक 1200-1300 मेंबर है, कोई भी आपको कभी भी सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता है, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। आप वो करके देख लो, उसके बाद अगर कोई तकलीफ आएगी तो उस ग्रुप में आप मंजेश भाई से कुछ भी पूछो, आई थिंक ही इज ओपन टू हेल्प एनी टाइम। जी सर, फिर आप लिंक कहाँ पर है सर? उसका टेलीग्राम लिंक कौन सा है? सर सर्च करना पाइथन ट्रेडर, या मेरा जो ट्विटर है इसके बायो में आपको मिल जाएगा सर, नहीं तो पाइथन ट्रेडर सर्च करिए वो भी हो जाएगा। सर पेड है फ्री है? फ्री है, फ्री है, सब ओपन है, कुछ पेड वेड बिजनेस नहीं, यहाँ पे कोई धंधा नहीं चल रहा है इधर, कुछ नहीं, हम लोग भी फुडू को ट्रोल करते हैं। अच्छा सर, तो सर कितना टाइम लग जाएगा फ्री? अगर उसमें मैं थोड़ा नॉलेज लूँ तो कितना टाइम लग जाएगा उसमें? बड़े भाई आप इनका वीडियो देखना स्टार्ट करो, पाइथन ट्रेडर भाई का वीडियो देखना स्टार्ट करो। एक बार आप वीडियो देखोगे तो कुछ फील तो लो। अभी क्या है ना, अंधे बिल में तो हाथ नहीं डालेंगे ना, पता नहीं सांप है कि चूहा है, काटेगा क्या। जी जी जी, एक बार वीडियो देख के थोड़ा फील ले लो, फिर पक्का आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक ही हैज एक्सप्लेन्ड इन लेमैन लैंग्वेज, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है पाइथन सीखने के लिए, मुझे तो नहीं लगता। आज के जमाने में आराम से सीख सकते हो, थोड़ी सी कैपेसिटी है अगर सीखने की तो आप सीख सकते हो, ईजी है। आपको ज्यादा कुछ हेवी लिफ्टिंग सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बनानी है। कैसे सर्वर से डेटा लाना है, उसको कैसे रीडेबल फॉर्मेट में करना है, उस पर कुछ इंडिकेटर लगाना है या कुछ कैलकुलेशन करना है, ये कोई बहुत बड़ा 30 मार्क्स मैं भी नहीं बन जाऊंगा सर। वो वाली बात है, जब किसी को आता है ना तो उसको तो नॉर्मल लगती है, जिसको नहीं आता उसको तो पहाड़ लगता है कि भाई कितना बड़ा पहाड़ है, जब आप स्टार्ट करोगे ना, बचपन से चलना थोड़ी सीखा है। मेरा बेटा है, अभी वो चलना सीखा है तो अभी उसको लग रहा है कि भाई बहुत ये कर लिया। जब नहीं चलना सीखा था तो वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, नहीं मैं बेड से नहीं उतरूंगा डैडी। सही बात है। कभी ना कभी तो करना है ना, मरते दम तक आपको कुछ ना कुछ नया करना ही करना है। मरना भी एक नया चीज है कि मर गया, ये कुछ नई बात हो गई। जी सर, एवरीथिंग इज न्यू फॉर अस। ओके सर, थैंक यू। नाम क्या हुआ सर? सर मेरा शिवम चौहान नाम है जी। ओके सर, ठीक है सर, मैं अभी स्पीकर से रिमूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट कुछ लोग वेट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। सर ये पाइथन पे से एक 920 का प्रोग्राम लिखा, और जो राइट नाउ जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एल्गोमेट और एल्गोबाबा, तो इस पे जो हम लोग रन कराते हैं ये लॉजिक को, तो ये पाइथन पे सही बेहतर होगा उसे? देखो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ टेल मंजेश। सर ये जो आप जो भी टूल्स जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कितने लोड हैं और उनका सर्वर कैसा आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब आपने पीसी पे रन करेगा तो उसमें कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान ये होगा कि आपका पीसी ऑन होना चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह सब प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन फायदे ये होगा कि आपके सर्वर पे आपके लोकल पे सिर्फ एक प्रोग्राम रन हो रहा है, या सपोज कि आपका 4 एल्गो चल रहा है तो 4 एल्गो आप प्रॉपर मॉनिटर कर पा रहे हैं। लोड कम है तो आपका स्लिपेज वगैरह कम आएगा आपका। नहीं, AWS या लोकल पे जहां भी आप चला रहे हैं, आप AWS में चला रहे हैं, आपने मैक्सिमम 4 एल्गो या 10 एल्गो चला लिया तो पूरा सर्वर पे मैक्सिमम 10 से आप सारा को मॉनिटर कर पा रहे हैं कि आपका CPU यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है। लेकिन किसी दूसरे वेबसाइट की तरह तो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे स्लिपेज क्यों आया, उनके सर्वर के स्लोनेस के कारण आया या मार्केट स्लोनेस के कारण आया, किस चीज के कारण आया। जैसे बहुत दिन ट्रेड डाउन होता है तब मंथ में 1 दिन एक्सपीरियंस सुनता हूँ लोगों का कि सर्वर बंद हो गया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लोग का रहता है। जैसे फिनवेसिया का भी कुछ इशू आते रहता है। तो ये फायदा बस यही है कि आपको अपना लोकल पीसी या क्लाउड की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप उनके ऊपर रिलाई हो जाएंगे। तो उसमें नुकसान ये है कि हम पर मंथ पैसा भी पे करना पड़ेगा आपको, और वो क्या कर रहे हैं, आपका सारा क्रेडेंशियल उनके पास है। अगर वो चाहे तो कुछ भी आप क्रेडेंशियल के साथ कर सकते हैं, करेंगे नहीं लेकिन फिर भी आपका एक क्रेडेंशियल आपको शेयर करना पड़ रहा है। और दूसरा चीज ये जो ग्रीक सॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर है शॉर्ट वॉल के लिए, तो मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस आने के बाद वो शॉर्ट करता है, तो वैसा ही पाइथन के थ्रू बना सकते हैं या फिर इट इज डिफिकल्ट? क्या मतलब, क्या आपका स्ट्रेटजी का है, कोई प्राइस पे आने का कुछ ट्रेड लेना? हाँ, नहीं जैसे कि हाँ मतलब एक स्ट्रैडल की प्राइस है
वो 10% अप आया, मतलब आईवी स्पाइक आया, तो वो उस प्राइस पे वो जैसे ग्रीक सॉफ्ट में होता है तो वो ग्रीक स्लिपेज का आइडिया बहुत नहीं, कम लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जो आपको बोल रहे कि आपका अच्छा। आईवी का था, आप पाइथन में आईवी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो सबीर भाई ने उन्हें शेयर किया है तो आप आईवी को तो रियल टाइम पे आप वो ट्रैक कर सकते हैं। उसको आप एक बेंचमार्क ले लिए कि चलो 920 में आईवी 30 था, अब उससे आप हमेशा कंटिन्यूअस ट्रैक कर रहे हैं। जब भी आपको 10% 20% जो भी है कॉन्फिगरेबल वैल्यू है जो वो क्रॉस कर गया कि अगर 10% हाइक आ चुका है, 30% आ चुका है, या अगर सपोज कोई एलटीपी के बेस पे कोई बंदा ट्रेड लेना चाहता है कि 920 में शेडल अप को 300 था और वो 50% प्राइस इंक्रीज हो गया ड्यू टू आईवी, सपोज करो कि 360 चला गया, तो मैं ट्रेड लूँ। तो ये सारा कुछ आप पाइथन में कर सकते हैं। जो आप टूल की बात करें, मैंने टूल तो नहीं किया है, लेकिन जो आप आईवी बोल रहे हो या प्राइस बोल रहे हो, तो वो सारा कुछ आप पाइथन में कर सकते हैं। मतलब टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पाइथन पे खुद का लॉजिक लिखिए, खुद का कंडीशंस मीट होगा, ट्रेड लीजिए, आपका टारगेट ऐसे लगा के रखिए, एंट्री टाइम एग्जिट टाइम लगा के रखिए, ये हो जाएगा। और कुछ एक बड़े ट्रेडर हैं, दे आर यूजिंग C++ एंड कोलोकेशन सर्वर्स, उसका क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये भाई देखो, कोलोकेशन मतलब फर्स्ट थिंग दे आर हैविंग डीप पॉकेट्स, स्पेंडिंग 50-60 लाख और शेयरिंग लाइक 3-4 लोगों ने मिल के ले लिया, दिस बिग थिंग पर एनम अपफ्रंट कॉस्ट है। आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओ ना कमाओ, वो पैसा देना है आपको, अपफ्रंट कैपिटल जा रहा है। देन हैव ए सॉफ्टवेयर दैट टैकल्स द ऑर्डर्स लाइक मिलियंस, लाइक crores of crores, 25,000 10,000 crore जो भी है पर सेकंड ऑर्डर हो रहा है, दैट वॉल्यूम टू हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू नीड एन decent infrastructure, beefier system up to the range of $100,000। वैसे सर्वर्स आपको चाहिए टू टैकल दैट सॉर्ट ऑफ मैसेजेस पर सेकंड। उसके लिए लो लैंग्वेज चाहिए, हार्डवेयर के हिसाब से सॉफ्टवेयर लिखा, कोई जेनरिक नहीं कि मैंने एक पाइथन कोड लिख दिया या नॉर्मल सी कोड लिख दिया। कौन सा सर्वर है, कौन सा सीपीयू है, उसका क्या आर्किटेक्चर है, उसका L1 केज कितना है, L2 केज कितना है, और उसके मेमोरी चैनल्स कितने हैं, मेमोरी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सीपीयू की कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसके जो अटैच FPGA का जो PCI लेन क्या प्रोटोकॉल क्या है, 4 है 5 है, सीपीयू से कितनी दूरी पे है, ये सब डिपेंड करता है। उसके हिसाब से फिर ऑप्टिमाइज कोड लिखते हैं, दैट टू ट्रेडिंग इन नैनो सेकेंड्स। उसमें क्या होता है कि राउंड ट्रिप टिक टू ट्रेड, मतलब जो इनकमिंग आई सामने एनएससी से टिक, एक ऑर्डर बुक आई, वो ऑर्डर बुक आते ही आपका ऑर्डर जाने में कितना टाइम लगता है वो नैनो सेकंड्स में आता है। बड़े HFT प्लेयर्स जो ये सब चीज अफोर्ड कर पाते हैं, तो इससे बेनिफिट वो है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी के सारे ऑप्शंस के या निफ्टी के सारे ऑप्शंस का साइमल्टेनियसली ऑर्डर बुक देखना है, नहीं कर पाओगे। AWS तो बड़ा ये क्या बोलते हैं, सर्वर भी ले लो 128 कोर CPU 1000 GB रैम ले लो, नहीं कर पाओगे। फर्स्ट द शेयर अमाउंट ऑफ डाटा दैट हैज टू बी ट्रैवर्स फ्रॉम NSE सर्वर टू AWS पॉसिबल ही नहीं है ना, लीज लाइन भी नहीं है तुम्हारे पास। दैट्स वाई हमारा अपना सर्वर उनके पास, उनके साथ लैन के साथ कनेक्ट, कोलोकेशन इज नथिंग बट प्लगिंग योर सिस्टम्स लैन इनटू देयर सिस्टम। आपका सिस्टम वहां रख दिया, उनके साथ लैन कनेक्शन में आ गया, दैट लैन कनेक्शन गोस अप टू GBPS 10 GBPS कनेक्शन रहता है। तो प्रोसेस करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज, और फिर उसके बाद उस आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्या 2 पैसे के लिए खेल रहे हो या पर टिक 5 पैसे के लिए खेल रहे हो या पर टिक 5 पैसा मान रहा हूँ। तो HFTs कैन गो विद लाइक, या बड़े प्लेयर, इट नॉट ओनली HFTs, दे कैन ट्रेड 1 लाख और 2 लाख क्वांटिटी फॉर दैट 5 पैसा, और दिन भर में इन्फिनाइट ट्रेड ले लेंगे। उनको तो ब्रोकेज से मतलब नहीं है ना, दे डोंट बॉदर फॉर ब्रोकेज एंड टैक्स, वो दे देंगे, ब्रोकेज देना नहीं। तो n नंबर ऑफ ट्रेड्स, 5 पैसे के लिए लाख क्वांटिटी में सोच लो कितने आ जाएंगे इफ दे गेट इन पॉजिटिव। तो ये छोटे छोटे आर्बिट्रेज डिपेंड्स करता है कि मतलब देखो ये क्या है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करना है। कभी भी मेरे को रिक्वायरमेंट पता नहीं है, जैसे मान लो कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है, बट मैं एक कंपनी खोल लिया, साथ में एक बड़ा ऑफिस ले लिया, सेटअप कर लिया, अब कुछ पता ही नहीं करना क्या है ना, और पूरा अपने सर पे बोझ डाल दिया कि अपफ्रंट पैसा भी लगा दिया, ये भी कर दिया, बट अपना रिक्वायरमेंट सब सेटअप। मेरा कहने का मतलब ये है, आई वांट टू make form your own requirement accordingly, you take actions, so plan accordingly instead of the other way around। उससे क्या होगा, अच्छा रहेगा।
C, C++, Rust सब चलता है. OpenCL, they do calculation. जो भी high frequency traders हैं, they are not doing on CPU. All trades are doing with FPGA or GPUs or ASICs, application specific integrated circuits. I think my answer कर दिया अगर आप satisfied Yes, sir. है Yes, तो. sir. Yes, sir. धार्मिक ट्रेडर करके एक हैं, तो देयर ही इज डूइंग दिस, तो वो सिंपल स्ट्रेटेजी रन करते हैं वो, उनका वही है. उनका फील अच्छा मिलेगा ना. सपोज यू नो यू आर हैविंग फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट हैंड, यू नो आपको क्या प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लाइक रॉ इंफॉर्मेशन, देन you have a bigger book in front of you, so you can plan accordingly what price suits you and get an exact feel. क्योंकि someone is connected to your own laptop, like you connected USB to your laptop and I am remotely connecting to your laptop. USB is having higher bandwidth, right? So उसको एक्सेस ज्यादा नजदीक और ज्यादा तेजी से मिलेगा. वो क्या करते हैं, वो सारे स्टैक्स भेज देते हैं बस वीवैप के नीचे. अभी उतना तो नहीं पता वो क्या करते हैं, बट आगे मेजर द आइडिया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द आइडियाज दैट. थैंक यू सर. Shabir, I have one more question. Yeah, tell me. From intermediate, from a starter level coder to becoming a intermediate coder, where can I get to see the quality code? Is there any place where if you already know some little bit of basics, and from there if I want to improve my code, where I should, is there any resource you recommend? Yes, sir. You can watch Sabir sir written codes. He frequently shares his code snippets in Telegram, in Twitter. You can follow the same. Try with LeetCode or any competitive programs. Check and meanwhile check the codes of the underlying libraries, because they are very well written. Like suppose one library you have the battle tested library for network request. So go to their repo or check in your own local folder and check how it is written, how it is crafted, how they are doing the things that they do very efficiently, because you are just touching their high level APIs, and how they are structured internally will give you a deeper insight how to write better codes. Like suppose you are the end user and I'm the library creator, so I will do all sort of optimization on all sort of nitty-gritties I will handle to make your life easier. So भी वो decent coding देखना है तो you have to look inside the beautiful libraries itself, and then programmatical this programming competition websites and all will give you some sort of idea how to write better code. Sometimes even you submit your own code and see other solutions and see how they have ranked up and down and what sort of methods they have applied. So it will broaden your insight, and you will get to know how real world things are doing. It is assumed that if I have to submit my library to a general public repository, I will go to some strict checks, and automatically my code will be of a good quality. That is also there, no? Is there, but you have to structure it. Otherwise, if you validate it according to their rules, all this CVE overflows, all sort of check and balance you have to check. So no, undefined behavior in your codes. अभी int के आप string है, most in Python, at runtime only you'll get the error. But when you see my code, if I write proper with types. यहाँ पे integer चाहिए. If you pass any other thing, you'll get upfront error bus. Expected was integer, you are passing a string. तो उस टाइप का ये करना है. Then only read the original documentation. Nobody want to, but original documentation you'll get fine-tuned details, like all the methods that are suppose I'll tell you one example. If I have to find something in a string, like suppose character A in a string, I'll write A in dash x is a string, x variable is having that string.
but it is the slowest method. Instead, I have to write x dot find bracket whatever I want to find. This is superior and faster. So when you read the documentation, they are having all these details. These are the generic methods. These are the efficient method over that. Then try to use that. See, in my course, you will not find loops and all list comprehension generators and all. So पहले तो मैं normally when I started my coding, I read it the other way, like how people were flawed and all. Then I get to know, was this is slower, I have to move to this. Then accordingly, when you write code and with experience, gradually your muscle memory will develop and you will write beautiful codes. Okay, thanks, Shabir. Thanks. डॉक्टर साहब बंद किया जाए दुकान? Okay, I think this time. Thankful. You have recorded this space, right? Yes. Okay, thank you. Just share it with everyone. Yes. Okay. So if they want to tune it at a later point of time, they can tune it. ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इसमें, but हाँ ठीक है, उसमें बेसिक्स भी है और जिनको मतलब आपके बहुत सारे जो अमृतवाणी थे, मैं भी इसको बार कभी बैक टेस्टिंग उतना डीप में जाऊंगा तो मैं भी सुनूंगा आपका। चलो फिर करेंगे ऐसा, कभी प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब के 3 घंटे आपके हमने ले लिए। No issues. Thanks everyone who has tuned in. I think many people came, just checked and left. लेकिन बहुत अच्छे सवाल भी आए, काफी लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा आज अपना। It's good. People thought us deserving to ask that questions. Okay, thank you all. Okay. Thank you. Have a good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night, sir. Good night, Manjesh. Good night, all. Good night, Shabir sir. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Thank you so much.